Yeah, I think we should start now. Yeah, guys. So, guys, thank you for joining in, guys. Super excited to have one of our star students. Okay, someone's phone is ringing. Yeah, yeah. So, super excited to have one of our star students, Shubham Dangi, with us today. And yeah, Shubham, most of you might know that he comes from a non-coding background. So most of you would be able to relate over here. And people who think कि coding मेरे लिए नहीं है, coding if you're from non-coding background, उनकी दुनिया बदलने वाली है आज definitely, ठीक है? And today's session, we would be talking mostly about Shubham's journey. Moreover, how did he go about preparing for the interviews? And what were the interviews like? Were there any biases towards having a non-tech degree? And most of the common misconceptions which most of you would have. So he'll be answering all of that. Okay. And towards the end, there would also be a live Q&A session. So stay tuned, guys. Stay till the very end, and you guys would get most of your answers. Most of your answers would be given. And yeah, Shubham cracked a lot of offers. Like how many offers he cracked, he'll be talking about that as well, and which company he finally chose and what was the reason behind that. So that would also Shubham would be talking about today. Yeah, guys. So yeah, please stay till the very end. And yeah, I think Shubham, you're there, right? Yeah. Hi, Shubham. Hi, yes. Hi, Weber. Hi, Kaustav. So, sorry, I switched that out. I joined from company email ID. Okay, no worries. Yeah. So, Shubham, we'd like to know a bit about yourself. Just can you give a brief background so that everyone is we know you, but yeah, a lot of people are new over here, so they might not be knowing you. Yeah, so if you can give a brief background. So, hello everyone. My name is Shubham, and I completed my BTech in 2017, and I was my branch was not core CSE, or you can say programming branch. So always my interest was more either to work in core branch jobs that you can say for mechanicals. There are L&T and that kind of for civil jobs. There are construction companies. So that kind of orientation was always there. After my college, I joined a startup called Let's and Doors. I joined over there as a marketeer, you can say, marketing manager who used to look into leads generation and everything. So my first job experience was also non-technical. And after working and shifting my career here and there around for 4 to 5 years, I finally decided that I should try programming. And then I researched a lot about the trainers, boot camps, everything. I hope you guys also have googled a lot. And then I found Sharpener on some Quora answers, and I think I had my first conversation with Kaustav. He might not remember, but I had my first conversation with him regarding my doubts, like how these guys help in placements and all, and what is the process. So yeah, that's been my journey till Sharpener. Nice. So, Shubham, when did you start coding? As in, when did you actually start coding? As in, when did that it hit you? कि okay, coding non-tech से नहीं हो पा रहा, coding ही करना पड़ेगा. So this answer can be a bit different. For first time in my life, I tried coding in 2013 or 14, I think, when I was in college. So I thought I should give it a try, because at that time there was a boom. Every branch person was trying programming. So I tried to get my hands on programming in that year, and then I gave up. I think around 15 to 20 days, even in the initial setup days only. After that, I didn't write a single line or code, or didn't even look into programming side for straight away 8 to 9 years, because what I had in my mind was
like in college you don't get guidance. Even the teachers or the mentors, whoever teaches you, they are more uh, on a stand ki you should learn by yourself, and like you should try Google everything. But nahi ho pata. Matlab, to be very honest, I was very new to this. I was like my schooling background is from Rajasthan board, a Hindi medium school. There was no 11th 12th optional computer courses also. All we learned in a school was Excel, Paint, these kind of stuff. So matlab, there was not even a little bit of exposure towards programming and how these things work. Also family background wise also, like either like our family encourages us to go in business side or in government job preparation side. So there was always a push. Even if I tried to have a career in these programming, and like, even if I started to think straight in this direction, there was always a pullback from family ki you should try the government sector first and all. So all these confusions wasted 6 7 years, I might say, from starting of my college. I didn't seriously think about starting programming. The people who were doing coding in college, I used to think that they have a different kind of uh, caliber intelligence. That's why they are able to crack it. But now, yeah, now I can say guidance is more important. Whenever you get stuck, there should be someone who is getting you out of that frustration that your code is not working, there is some kind of error that might be directly displayed on a screen, but you cannot understand because you have not experienced it. So with Sharpener, what like I the first thing that I learned was ki every error that you get in your code, every bug that you get in your code is already received by some other coder in this universe, and he has tried to find the solution for it. You will also find the solution for it. There is nothing new you are doing. Like we are not inventing or developing the whole process. This is already being done. The solution also already been found. This is just a matter of time. Ki when do you find it, or when someone helps you? Okay, this is the way you can resolve this. Once that is also resolved, then I think development is very like I am loving it. Makes sense. When I think everyone agrees to this. Ki, whenever he writes this, even three lines of code, and it gets you output, it is a different kind of feeling. Yeah. It's True. just about the errors and getting past that stage. So that's been my like coding experiences before Sharpener. Nice, nice. Yeah, it's like it's good to get errors, I say. Like there are times where like when you reach a certain stage, right? Like there are like there is some issue happening and you're not getting the errors only. And that is the most frustrating state. Like when you're like 4 or 5 years experienced, you come to a stage where you don't get errors. And something is going wrong. As in, so that is like a stage would like that would also be coming when once you like 5 years down the line. So yeah, it's good to always get the errors and try to understand them Yeah. and try to solve. Yeah. Nice. After some So, time, actually, errors will not feel like it will not be a burden anymore. And Yeah, you'll just be like, okay, error aaya hai, you know part how of to get it process. resolved. But it's a part of the process, right? And error is bound to come, right? We are bound to make mistakes, right? But how we resolve it, how do we understand like how do we interpret error? That is very important, right? How fast we resolve it, and that speed will also keep on improvising, right? As and when you start coding, the more you learn, speed will also it will keep on improvising. So yeah. So tell me one thing, like, so you told me that okay, you are from a mechanical background, right? So like say when you were starting with coding and all, right? So how was it like? Like say what actually made you shift from that particular background to this particular background, right? Wasn't So you like you were not scared or something? yeah, I was scared because there were multiple answers on Quora internet everywhere. There is a resistance in hiring non-IT background people in coding jobs. But now I can say for sure the developer, like the employer, is never looking what background you are coming from. He is just looking whatever problem statement he has in his company. Are you able to solve it or not? And this is like I honestly believe now this is the point blank truth
for this industry? The same question that you asked me, Vaibhav, I asked this to Costa. I had these two major doubts. One was this gap from my BTech completion. Another was this non-IT background. So I was like again and again insisting on the same question: will you be able to get me an interview opportunity? I never asked them, ki, will you be able to get me a job? Because I had gone through this process earlier when I was applying for non-tech jobs. So there should not be anyone who is promising you jobs, but like everyone, if you get the interview opportunity, then it's in your hands. So I asked Kaustav again and again कि आपसे हो पाएगा मतलब आप पाओगे. And only thing he told me honestly on that call कि there might be a possibility you may not get the same package that your peers will be getting. For example, someone will be getting 8, 9, 10. You might be offered a little less because your background is a little bit different. That also I think worked out in a better way. I tried to be honest with you, like because later on, if I'm not honest, like you will start doubting yourself. कि Costa ने तो ये कहा था कि मिल जाएगा. Am I doing something wrong? But now that I was saying something and you got something even better, how does that make you feel? keep the expectations low and let the outcome be higher. मतलब very happy with it. Shubham, even right now, like still people ask me, and the good thing about when people ask me right now is I can use your example. That, in fact, in the last 1 week, I have had some people asking me that I'm from this background, itna gap hai, ye problem hai, ye scold ho, and ultimately I just say that if you have any extra doubts, visit Shubham's session. Don't believe me, he'll tell everything. I'm sure a lot of them are right now over here. I think these questions will always be forever. मतलब everyone when comes to this stage will always face these doubts. But like to give more examples now, because I have worked in the company, I am seeing my colleagues. I would like to tell this: there are people who are starting their jobs in like good startups, good companies at the age of 29, 30. They are still early. 29, 30, 31, they are starting their development journey as a software developer. You can see when initially they are in probation. So they are just trying out this phase, and even companies are allowing them, because this is not something you can only learn in age of 20 or 22. It is a skill you can acquire whenever you want. So now I think age, gap, background, these are not barriers. Totally makes sense. Yeah. So okay. Okay. Now let's come to the next question. Like Shubham, like you've explained, like you were working in a different company right before this. So like what was the difference? As in like right now, like you've already worked, I think for a month or month and a half in the current company. So like any differences which you feel in non-tech and tech there is a difference in terms of working style? To be like this would offense other people who are not in IT background, but to be honest, standard of life is much better. Matlab, you get the value for your time. You get a balanced life, because in development, no one can tell you you need to develop this piece of code in 4 hours, 5 hours. They also don't know. This will take time, so this is up to you. You balance your time, you manage your day. Everything is according to you. And so you asked me previous question. I think that got skipped also. What was the major point that I decided? No, I should not work in a mechanical company or in sales and marketing, and I should shift to coding. So there were 2 pinpoints that I had listed down. I think one was flexible location opportunity, work from home also you can say, and the difference of cities opportunity wise. So in other sectors we don't have that much of opportunities in smaller cities, in cities like Jaipur or like nearby cities. But what tech is offering us now after COVID, even before COVID, I started to listen to these news and all. People like companies are allowing people to either work on hybrid mode or
who work remotely also. So that kind of comfort that these guys were offering, that was a good pinpoint for me. Apart from this, the growth. So even if I work in a mechanical company for 3 to 4 years, my package after even like I either I switch or I don't switch, even with the good performance, the package was not going more than 10 to 12. They were asking for further higher degrees, let it be MBA or MTech, that kind of degrees were asked. So, and in programming, people are excelling above 30 lakhs LPA with BCA degree also. So, yeah, this is a free, fair market. Everyone should try True. their hands on. We have actually gotten Shubham people just after class 12 late. Okay. Yeah, We have also started that model, right, where you don't need a degree because you don't actually require a degree. You don't require anything. You just require skill. You should just know what is GitHub, Git, right? You should know how to write code, and you should know how to search on internet, right? You should know how to resolve bugs and all, and then you're good enough, right? So internet that's and pretty much internet and a working laptop or computer. That's all. Yeah, that's all. You are set for your life if you try hard. yeah. Okay. Nice. Okay. So Shubham, like, okay, let's talk about a little bit. I think since you're from a non like tech background, okay, basically. So what I also want to know is like, what was your understanding of preparing for SD, as in before you joined Sharpener, and then like so is it like when you were thinking of joining Sharpener or any other boot camp? Like did you have some idea in mind कि ऐसे करने से हो जाएगा maybe, and then maybe you thought कि okay मतलब this नहीं ऐसे तो नहीं है, मतलब when you joined Sharpener and you thought कि it's totally different. So before joining Sharpener, I didn't even have had a like, concrete plan. Ki this is how I should prepare for the job. What I had in my mind was कि I'll download some Udemy course that is on month stack and all, and I'll follow that. But होता क्या है कि this process I had followed in college also. After college also, when I was working and I was having time while living in Bangalore, so at that time also I thought कि I will prepare like this. But it is a like 2 day high Joss energy, and after this you fade away. मतलब your interest fades away, or the error part that I was talking. You face Yeah. some difficulties. You would always think there are friends of yours from college who are working in the sector. They will help, but it is not that easy actually. Matlab, you cannot ask everyone again and again. There, he is not bound to help you. So that kind of resistance is always there. I also thought ki I will try this way only. Why to go with any other boot camp and all? So initially my approach was that. Then after failing 2-3 times, I Yeah, thought that's I should get environment where other peers are also learning. I'll get my stand ki whether I am that bad ki I'm not able to even continue this journey for more than 2 days, or there is problem with my approach. makes sense. Yeah, actually, that's the thing, right? Like people watch YouTube courses, and like YouTube has such a bad advertisement mechanism that they start watching coding courses and they end up making cake or something or the other. Like, itna advertisement dikha ke they end up doing something else altogether, right? Like, because there's so much of like you start watching coding and there's so much of distraction on the right. You watch this, watch that, and then you suddenly forget you have to code. And you end up in a different world altogether. Similarly, Udemy also, like the statistics say कि 1% completion rate है. तो कितना मुश्किल है 1% में आना is we all know, right? Correct. Yeah. YouTube का तो I also agree. I started looking for an answer of a lead code question and finally ended up on some blogger's video. Wasted 3 hours straight up. Well, YouTube can be a good source of learning. Either you have to be very much disciplined, or you will like distracted. You will be distracted. But there is also one problem, what I believe with YouTube. Like YouTube probably because people who are posting content, they are posting it in a linear manner, right? So now let's say after doing one thing, you cannot jump to another thing which is like completely opposite, right? And then you not understand the another thing, and then you start banging your head in the wall, right?
Otherwise, you'll get some error or something, and then you don't know how to like basically resolve it or something, and that is where your whole journey ends, right? I have seen, so because this thing also happened with me, right? When I started learning my process, right? So I faced a lot of difficulties, but I was lucky enough to have very good seniors who were like continuously telling me that okay, this is the process. If you go through it, like you'll probably learn it, right? So I learned it the hard way. So that is the reason what we are actually trying to improvise over here. Uh, so when did you like? So you told me that costume convinced you, right? So initial days would have still been very difficult, right? Let's say when you started with this, right? You still would be thinking that whether sharpener is right or not, right? Like whether you should do this or like how was the fluctuation? How did you make up your mind then? Okay, like I will continue with sharpener because you did a 3 month training over here, right? So was it like, did you feel ever that you should stop or something? How was it? So I would like to answer this question from like around 10 to 15 days more a pre-background page. When I called Costa, I started this journey with some other boot camp organizer. I would not like to name, but these people are big. So I started my journey over there. We had a free 1 month kind of uh, this demo period. After that, they apply for your papers and loan and everything. So over there, it was a batch kind of thing. Like whole batch was getting processed, and you have to wait for other people to complete their module before you move to other module. So that was a major point that I figured out. I cannot go in such kind of organizations. Another point was a one-to-one interaction with the mentor that was missing over there. So these 2-3 points I figured out these should be my priority while selecting the bootcamp provider. And then Sharpener was meeting all the requirements. Financially also, you guys were less stressful. In the market currently, I think everyone is charging about 3 lakhs. When I researched, so financially also it was looking a good opportunity. There was only one doubt. I have not listened to this name Sharpener. I don't know how much it be. So there are replies and like feedbacks on internet. People join boot camps and then after completing their course, wasting their 6 months, they are not getting any opportunities. Because they have either paid the amount in upfront or the company has not gotten any losses. So they may refer, they may have network, they may not have the network. That kind of uncertainty was there. Many internet feedbacks were there. So this was a major doubt for me कि मैंने कभी शार्पनर का नाम सुना नहीं था तब तक. मैंने सिर्फ एक कोरा पे आंसर देखा था. So those were the bottlenecks. But after having the conversation with Costa, and like there is one point when you have to let go all the doubts and then just start कि जो होगा देखा जाएगा. Let's see after 2-3 months कि कैसा है organization. In initial 6 to 7 days only, when I saw Vaibhav was my first mentor in DSA parts. So I thought कि okay, these guys are already working in their companies, working employees they are, and they are taking the organization also seriously. So ऐसा तो नहीं है कि I would not get even single opportunity if I am capable. Then I expedited my learning process and joined full-fledgedly. So that's nice, yeah. Shubham? Yeah, go ahead. Awesome. No, I was wondering, like, interview stage, of course, we'll discuss in detail because I think सारे non-tech background वालों का interview सबसे ज़्यादा डरना होता है that I will study, I will learn, but finally will I get interview calls and all. But I just wanted to understand, were there any special moments in Sharpener during your preparation stage जब तुमको थोड़ा डर लगा, तुमको थोड़ा confidence build हुआ, some interaction with someone? कुछ ऐसे moments है तुम face? डर लगने वाला तो is everyone comfortable in Hindi? I think the crowd. So it's very difficult to 100 people. Might not be. Go ahead, comfortable in Hindi. डर लगने वाला तो I did face the moment because खोने के लिए हाई गया. there was a thing कि मैं कुछ बहुत heavy amount invest करके आप लोगों के साथ जुड़ा था, and all the investment that was from my side was time.
कि I was missing on some fun parts in my life, parties in my life, and was like preparing with you. So that was the only kind of investment. तो सिर्फ वो बर्बाद हो सकता था for 3 to 4 months. And I think this fear motivated me in a good way. कि usually when like this was also my question, and I think today also whenever I open this Discord platform of Sharpener, तो एक question बहुत repetitive है कि hey Yash, please tell me how much time it will take to complete DSA, how it will take to complete the whole module. तो ये बहुत repetitive question है और ये मेरे को भी बहुत ज्यादा लगता था कि कितना टाइम लगेगा. मैं इससे भी पूछा था कि मैं उसे पूछा था कि what do you think should be the right pace कि I should devote this much of time in DSA. उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मर्जी है, तुम हो सकता है 2 रात में खत्म कर लो, हो सकता है तुम्हें महीने लग जाए. So this is the question I want to answer to everyone कि this is all up to your pace. I completed मतलब शुरू के 7 दिन I wasted because I was not planning my day, I was not preparing, I hadn't set any targets. But after full-fledgedly and like discipline in a disciplined way, when I started to learn with Sharpener, it took me around 2 months, 14 or 15 days, 2.5 months to complete everything from DSA. Then I think basic JS kind of module was there, and then backend or frontend, whatever you choose. So all these modules mostly took 2.5 months to me. Sorry, Kaustubh, I forgot your actual question. आपने क्या पूछा था? Okay, Kaustubh has frozen, I think so. Okay, I think this answers all, I think so. But Shubham, like you were saying, I think this would be a very good thing for people to learn. Is ki, how did you plan your day? As in, like, what was the discipline thing which you were saying? Like, that would be very important, I think, so for everyone, like whoever is trying to become a good, strong coder. So, how do you go about the discipline portion? How did Okay, Kaustubh is breaking. You're breaking up, Kaustubh. Kaustubh, your voice is actually breaking. No, it's okay. But It is still breaking. Okay. So मतलब everyone has his own way of executing things. I think parents always used to tell me कि ना एक timetable बना लो, सुबह इतने बजे उठना है, ऐसे follow करना है. I watched some video of some person who was also from mechanical background, joined Sharpener, and around 11-12 के आसपास place हुए थे. तो उन्होंने अपना शेड्यूल बताया था कि I used to wake up at 4 and everything. तो देखा था and I thought कि ये करना पड़ेगा ऐसा कुछ. बट मेरे से कभी भी ना एक फिक्स शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाता था कि 4 बजे डिसाइड कर दिया तो 4 बजे रोज उठ ही जाऊंगा. दैट काइंड ऑफ पर्सन आई वाज ऑलवेज. So in this thing, I didn't plan anything, and I started learning at Sharpener. Also wasted my 7 to 10 days, and then I realized that this is also happening the same thing what I've been doing in last 4 to 5 years. Then finally, I planned rather than planning my small days, I planned the life itself. कि अभी मार्च चल रहा है, कब चल रहा है. I wrote down a date. कि by this date, I need to be placed in the technical company, and this should be the first month or the first date. For example, 1st July, you can decide, or 1st August कि इस दिन मेरा पहला salary credit हो जाना चाहिए. And then I planned everything according to it only. कि if I am investing somewhere, if I am repaying my loans or anything, so I planned my dates accordingly. This slowly fitted in my mind कि before this date I need to get placed. So reverse process में it started to plan कि if I need to get placed before that date, then at least 15 days prior to that date I should be sitting in companies. I should have completed all the mock interview process in Sharpener's module. तो उस हिसाब से मैं रिवर्स वापस चलता हुआ आया. एंड देन आई मतलब मेरे पास एक proper timelines थी. Rather than day wise schedule, I had the timelines कि DSA module I will be completing by 15th of March. This thing I should be completing by this of date. So that kind of planning I did. And when these deadlines started to fluctuate, I used to ping in the night also कि yes ये help करो. And मेरा पहला deadline fluctuate हुआ था for DSA. After this, I started one thing कि don't be dependent only on the mentors. So अभी शार्पनर को उस वक्त ना WhatsApp ग्रुप्स हुआ करते हैं, मतलब अभी भी है शायद एक्टिव है. तो WhatsApp ग्रुप्स पे there are peers who are learning alongside you. So I had a bad habit, I think, like
many people even ignored me, gave me bad vibes also, but मैंने वही 250 पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैं एक नंबर से चालू हो जाता था कि भाई तुमको भी एरर आया क्या, तुमको मॉड्यूल कंप्लीट किया क्या। बहुत लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों से। आई थिंक उस वक्त जो बैच चलता था कोई मैंने छोड़े नहीं होंगे ज्यादा लोग जो एक्टिव किसी मैसेज पे करते थे या फिर मैसेज सीन भी करते थे। मैंने सबको पर्सनली पिंग किया कि ये दिक्कत आई तुमको, मेरे को बता दो, मेरा हेल्प कर दो, मीट्स पे आ जाओ। सो दैट वाज द अप्रोच आई फेस। और जब ये वाला चीज स्टार्ट किया ना कि पीयर्स से भी पूछने लग गए, तो देयर वुड बी गुड पीपल आल्सो। मतलब आप 10 को मैसेज करोगे, 7 लोग ऐसे होंगे जो डोंट वांट टू हेल्प और मतलब माइट बी बिजी समवेयर, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट 3 तो ऐसे मिल ही जाएंगे। सो in a way if you think कि before 15th March I had 3 mentors, 2 mentors, Vaibhav and Yes भी मतलब I think बाद में आए थे in this node JavaScript, yeah. node kind of thing। पहले सिर्फ वैभव थे। वैभव को कितना टाइम मिलेगा यार, कितने बच्चे हैं ग्रुप के अंदर। तो आप अपने मेंटर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर जैसे मैंने जब अपना डीएसए का मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था तो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि कोई भी मुझे अगर पिंग करता है तो आई विल गिव हिम एटलीस्ट 15 मिनट्स। मतलब मैं गूगल मीट के लिंक्स भेज देता था कि लेट्स कनेक्ट एंड उसके ऊपर पूरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते थे। इसने दिस हेल्प्ड मी आल्सो इन अ प्रोसेस की दोज क्वेश्चंस दैट ही वाज स्टकिंग इन, मेरे को एकदम याद होने लग गए थे कि ठीक है इसका सॉल्यूशन तो ऐसे आएगा। एंड आपको भी गाइडेंस मल्टीप्लाई हो जाती है सीधी सीधी। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल मेंटोर। तो दिस एक्सपीडाइट्स द प्रोसेस वेरी वेल। एक ही प्रॉब्लम को लेके रादर देन वेटिंग फॉर नेक्स्ट डाउट क्लास, जस्ट फाइंड इट आउट। गूगल पे सर्च करो, नहीं मिले तो आसपास वालों को सबको मैसेज करना स्टार्ट करो। दो गाली देंगे बट मतलब योर लाइफ, वो गालियां मैटर नहीं करती। आई थिंक हम लोग इससे इंस्पिरेशन लेके हम लोग ने वो डिस्कॉर्ड में ऐसा स्ट्रक्चर भी बना दिया है कि नाउ पीपल कैन सी कि कौन उनके सेम लेवल पे है। सो नाउ पीपल कैन ask the same thing in the Discord channel itself। मतलब we made multiple channels and you can see कि कौन वो same level पे है वो बंदा, तो you can ask him only कि ये doubt मेरे को आ रहा है, help कर दो। So Discord is a good place, yeah, for your help। And plus by this I think so your explanation skill also improves by a lot, right? So probably let's say whenever you're trying to explain something to someone, right? So it's a indirect mock interview which is happening of yours. So we are introducing peer-to-peer interview right now. So probably like where people will interact like with 2 to 3 people and they'll understand who their peers are, how they are learning, what is their mechanism. Probably ऐसा हो सकता है कि एक peer might not be that great, right? So that is the reason why we are introducing like you take 3 to 4 interviews of your peers. Your peer will also take your interview. And then gradually this entire system will build, right? Because at the end, everyone is trying to get to that level where they can get a good job, right? So it's Correct. like together you're moving. They are not your competitors. They are someone who can help you and then go along with you in your own journey. So nice. Good initiative it will be because मैं ये चीज यश को 2-3 बार सजेस्ट भी किया था कि ऐसा कुछ दे दो। मतलब because one thing I want to tell everyone is कि no one is bound to help you। मतलब even if in Sharpener, so we will give like this comparison wise कि ऐसा होगा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि if I join Sharpener तो Sharpener की पूरी responsibility होनी चाहिए मेरा सब कुछ solve करने की। But to be very realistic in life, मतलब I have gone through the journey। कॉलेज के अंदर भी हम लोग around 20 lakhs की फीस पे करते थे। टीचर्स were never bound कि if the student is not अंडरस्टैंडिंग समथिंग तो उसको समझाओ ये चीज। उससे थोड़ा बेटर मतलब काफी बेटर आप कह सकते हैं कि अभी मेंटर्स हो गए हैं शार्पनर के। आप कह सकते हैं कि दे आर एटलीस्ट मतलब क्योंकि आप लोगों को पैसा तब मिलता है व्हेन आई एम गेट प्लेस्ड टू बी ऑनेस्ट। तो वो बहुत अच्छा मॉड्यूल है। लेकिन इसके बाद भी टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मीट आई वुड लाइक टू टेल कि देयर वुड बी गैप्स कि मतलब देयर आपको 6 घंटे वेट करना पड़ गया, 12 घंटा वेट करना पड़ गया एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए जो कि 3 मिनट में रिजॉल्व हो सकती थी। तो मतलब ऑलवेज ट्राई टू हैव द एटीट्यूड इन लाइफ कि किसी तरीके से अपना काम कैसे निकाल सकते हो बाय आस्किंग फॉर हेल्प। तो दिक्कत वहीं आती है व्हेन आई यूज्ड टू पिंग पीपल हैविंग दैट माइंडसेट इन माय माइंड कि ही शुड हेल्प मी, तो एटीट्यूड में डिफरेंस आ जाता है एंड देन ही वोंट हेल्प मी। इवन इफ ही विल हेल्प मी तो वो एक बहुत ही अलग लेवल पे होगा एंड देन इट विल नॉट एक्चुअली हेल्प माय लर्निंग कर्व। सेम चीज अभी कंपनी में जाने के बाद भी आती है कि यू विल बी गिवन मॉड्यूल्स, यू विल बी गिवन टास्क्स टू परफॉर्म कि ये चीज डेवलप करके दो। तो सब चीजें सबको नहीं आती हैं। मतलब
there are multiples of frameworks. अभी people were messaging me कि आपने एक्सप्रेस सीखा या फिर आप नेस्ट.js, मतलब कौन से हर कंपनी में जहां आप ज्वाइन करोगे there is a total straight away new framework. आपको बस ये फाइट करना आना चाहिए कि how you are asking people for help, and if they are not helping you, then I personally think कि वो मेरा ही प्रॉब्लम है कि मैंने ढंग से पूछा नहीं या फिर मैंने ढंग से फेवर, बिकॉज दैट इज अ फेवर. कंपनी में आप अपने मैनेजर से फेवर लोगे, अपने कलीग से फेवर लोगे, यहाँ पर बूट कैंप्स के अंदर आप या तो अपने साथ वाले स्टूडेंट से फेवर ले लो या अपने मेंटर से ले लो. तो मतलब ये चीज आई थिंक कि हर पार्टिसिपेंट पे ही होनी चाहिए कि ऑन हिज ऑनर्स ही इज गेटिंग दैट हेल्प और नॉट. करेक्ट. क्योंकि वही है यहाँ पे, जैसे इन द डेटा सक्सेस पार्ट ऑल्सो, like even if I'm resolving doubts on an everyday basis, there is this gap of at least 9 to 10 hours, right? Because there are like after a certain stage, I cannot resolve it on WhatsApp, right? WhatsApp में तो impossible ही है. So there are a lot of people who are like, sir, please text कर दीजिए. And नहीं होगा text करके, like you'll not understand things. I can just text you the code, probably you can just copy paste and then move ahead, right? And so that is the reason why I tell them, okay, join this session, I'll help you out, right? वो रात को ही होगा, right? Because अब मैं पूरा दिन ही सेशन लेना पड़ेगा नहीं तो, right? मतलब in order to get the doubt resolved instantaneously, right? So it actually makes more sense कि you get a group of your peers, right? Probably try करो, probably first try to debug it yourself. If you're not able to debug it, ask your peers. Then probably you can come to me or something. Like I'm there, I'm always there, right? अगर there are ways where your doubt does not get resolved, I'm always there. There are other mentors who are there who will continuously help you out. But तुमको भी खुद fight मारना पड़ेगा. Coding is nothing but you being a warrior, right? Just fighting your way out, right? वो किसी से भी हो, तुमको अपना काम निकलवाना आना चाहिए बस. That is very important. This is the term you can say कि अपना काम निकलवाना. Because मतलब ऐसा स्कूल में भी हुआ है, कॉलेज में भी हुआ है कि एक बार टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो देन व्हाटएवर यू डू वो हेल्प ही करेगा, तो अच्छे से हेल्प नहीं कर सकता. एंड आई हैव सीन पीपल, मतलब इन आवर क्लासेस इटसेल्फ कि दे आस्क इन अ वे कि मेंटर विल बी फ्रस्ट्रेटेड. तो दैट इज अ प्रॉब्लम विद द एटीट्यूड. एवरीवन शुड जॉइन आल्सो विद द सेम थिंग कि उन्हें सीखना है, मतलब आपको मुझे सीखना है. जब मैंने ज्वाइन किया था तो देयर वाज अ प्रायोरिटी कि मुझे सीखना है, कैसे सीखना है दैट आई विल फिगर आउट. तो मतलब आई थिंक दिस शुड बी स्टैंड. एंड आपके वो टाइम वाला तो आई आल्सो थिंक कि 9 to 10 आवर्स गैप वो मैंने सबसे ज्यादा फेस किया है. बिकॉज एवरी डे आफ्टर डिनर आई यूज्ड टू लॉग इन ऑन शार्पनर कि चलो अब सीखना स्टार्ट करते हैं, और तब तक सारी क्लास पीयर्स सब चले जाते थे. मैं रात को 10-11 बजे के बाद 2-3 बजे तक वो मॉड्यूल्स कंप्लीट करता था, असाइनमेंट्स कंप्लीट करता था. तब कोई होता ही नहीं था. कुछ बचे बच्चे होते थे जो 12:30 बजे ज्वाइन कर लेते थे. सो अब मेंटर तो नेक्स्ट डे आएगा ना, और नेक्स्ट डे जब आएगा तो हो सकता है I might be outside, तो मैं वो सेशन भी नहीं अटेंड कर सकता. तो you have to figure out. It's your life. मतलब that kind of thing is there. Correct. And almost all your peers also, Shubham, like most, like so यहाँ पे तो like right now people who have completed, so you might have interacted with a lot of peers. So they would have also gotten placed into different set of companies, right? Yeah. So who are these peers? Like कौन थे? I actually don't remember. अभी नाम लेना will be like कि सिर्फ हमारे 4 का ही नाम क्यों लिया. Because बहुत लोगों ने मेरा हेल्प भी किया है एंड मैंने बहुत लोगों को पिंग किया है. मतलब माय दिस व्हाट्सएप वाज फिल्ड कि एक ही एरर में कॉपी पेस्ट कर देता था कि किसी को आता है क्या. Broadcast. But there were people who even like sat with me for 2 hours कि यदि SQL में इसको एरर आ रहा है तो इसका सोल्व करवा के देता है. There are good people. I truly believe this. लोग हेल्प करेंगे, 10 नहीं करेंगे 11वां करेगा, कोई ना कोई तो हेल्प करने आ ही जाएगा. एंड शार्पनर का एडिशनल पॉइंट व्हाट आई थिंक इज कि मतलब people should not focus on कि अभी यहाँ पर mentorship मिलेगा या नहीं मिलेगा, mentor will be able to contact me or not. I think your main USP or where I got help actually was after completing the module. उसके बाद जो process होता है, I have tried this thing in after college also when I was making my profile in Naukri.com, Angel List, everything, and then getting to the interviews. That process is so slow कि 1-2 महीना तो मुझे ढूंढ के इंटरव्यू शेड्यूल करना है और इन सब में लग जाता है. I think in a week I might be getting 2 or 3 interviews. That kind of process is there when we try on our own. और शार्पनर और एनी बूट कैंप ऑर्गेनाइजर का सबसे जो पिन पॉइंट किसी भी स्टूडेंट को ढूंढना चाहिए, आई थिंक दैट इज कि रेफरल्स कितने मिल रहे हैं, नेटवर्क कैसा है. उसके बाद इवन इफ वैभव वाज नॉट कॉन्टेक्टिंग मी फॉर स्ट्रेट अवे 7 days, आई वुड लेट इट गो.
मतलब ये चीज हम खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं, बट ये जो रेफरल और नेटवर्क वाला है ना, दैट थिंग हैज स्ट्राइक मी अ लॉट कि मैं दिन में 2 इंटरव्यूज भी दिए हैं मैंने, एंड एवरीवन वाज लाइक सीरियस इन हायरिंग मी। ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को पिंग करके इतना खींच लिया है कि ठीक है एक बार इंटरव्यू ले लो इसका भी, जो वो मतलब वो कराना नहीं चाहता, बट हम आपने क्योंकि इतना पिंग किया है उस बंदे को तो इंटरव्यू करवा देगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब ऑल द कंपनीज वर एक्टिवली लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स एंड दे वर कॉन्टेक्टिंग मी, तो आई थॉट मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट शार्पनर। From coming to the set point, how many offers did you had? कितना rejection किया था तुमने? Companies were not rejecting it, right? So we actually made him sit for how many companies? Probably 2-3 interviews so every day you were giving, right? No, And so I gave 2 interviews per day for 3 days, and then I thought कि this should not be the schedule, otherwise मतलब I'll be totally confused. ऐसा था कि only 2 companies rejected me. उसके बाद I was having all the offers in hands, और फिर मतलब माइंड पूरा मेसी हो गया था कि what to join, what not to join, कौन सी कंपनी अच्छा है। and what happens is कि हर अगला जो पैकेज होता है वो पिछले से 10-20% ऊपर होता है। पिछले वाले को फिर आपने पिछले वाले का मन बना लिया, एंड देन अभी अगला वापस से और ज्यादा पैसे दे रहा है, एंड देन यश से बात करते हो तो कहता है कि ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा प्रोसेस चलता जा रहा था। सो आई स्टार्टेड टू मतलब सेग्रीगेट कि मतलब आई थिंक यश इस पे मुझे बहुत डांटेंगे भी। यश का एक बहुत पर्टिकुलर स्टैंड रहता है कि किसी भी एचआर को मना मत करो कि यू डोंट वांट टू ज्वाइन। मैंने नहीं किया था शुरू में, बट वो इतने ज्यादा इंटरव्यूज लिस्टिंग के अंदर आने लग गए थे कि मैंने बिना यश को बताए आई डिसाइडेड कि मैं उनसे पूछ लेता था कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैलिबर यू गाइस, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम पैकेज ऑफरिंग, और मैं कह देता कि नहीं इतने में नहीं हो पाएगा, इतना है ऑफर। बट दिस थिंग आई थिंक स्टार्ट्स व्हेन यू हैव समथिंग इन योर हैंड। तो पहला कंपनी था आई थिंक मैंने 5.5 का दिया था कि ठीक है मतलब जैसा बोल रहे हैं मेंटर वैसा करते हैं। तो वो जब आ जाता है उसके बाद इट इज कॉन्फिडेंस, और फिर ठीक है मतलब आई थिंक कि क्यों किसी का टाइम वेस्ट करना है। कंपनी के भी रिसोर्सेज खराब होते हैं कि वो आप पे 2-3 राउंड्स लगा रहे हैं एंड यू आर टोटली श्योर कि आप नहीं जाओगे इस कंपनी में। तो एक बार जब मेरे को सेफ हैंड हाथों में ऑफर आ गए थे तो आई स्टार्टेड टू डिक्लाइन द एचआर कॉल्स ओनली। जो बहुत अच्छी कंपनीज थी जो अच्छा पैकेज ऑफर कर रही थी फिर उन्हीं में बैठने लगा। एंड व्हाट आई had planned in during my interview days कि दिन के 2 इंटरव्यू से ज्यादा नहीं देने चाहिए, because then you don't get the time to introspect and like the peaceful. I think if 4 AM is my interview time तो 3 बजे के बाद शांति से हर कैंडिडेट को बैठना चाहिए, मतलब he will get everything in his head cleared. And one thing this I advised to other few students also who messaged me. This would be very helpful for you guys also. So I already told ना कि मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम एंड राजस्थान बोर्ड, सो इंग्लिश नहीं है इतना अच्छा, अभी भी फील हो रहा होगा प्रोनाउंसिएशंस वगैरह के अंदर। तो द पॉइंट इज यू शुड नो इंग्लिश। मतलब बहुत लोग अभी भी चैट पे मैंने एकदम मैसेज देखे थे कि इंग्लिश जरूरी है क्या। वेरी हार्श रियलिटी, बट इंग्लिश आनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि वर्ल्ड इज रनिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंग्लिश इसलिए नहीं आनी चाहिए कि दिस you should be speaking fluently and everything. This should just be a mode of communication कि whatever you know, whatever you have understood, you can explain that to the interviewer. Because what happens is interviewer are like many of the times interviewers are from Hyderabad or Bangalore and like the lower region of India. So हिंदी उनको नहीं समझ में आती। तो what I did for this is, and I advised other students also कि हमको कितना ही एक्सप्लेन करना है, हमको we don't have to explain whole life ना कि कुछ भी पूछ लेगा। हमें पता है कि Node.js ही पूछेगा, Node.js के अंदर एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, मे बी प्रोग्रामिंग के कुछ चीजें। सो यू ऑलरेडी फॉलोड दिस थिंग, यू ऑलरेडी लर्न दीज थिंग्स इन द मॉड्यूल इन शार्पनर। तो जस्ट लिस्ट देम आउट कि दीज कैन बी योर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देन प्रैक्टिस विद योरसेल्फ कि खुद ही का वीडियो रिकॉर्ड किया एंड खुद को वापस सुना कि जो आपने बोला इंग्लिश में आता सबको है कि कैसे जेएस काम करता है, बट द पॉइंट इज टू एक्सप्लेन कि सामने वाले को पता लग जाए कि आपको आता है। तो इंटरव्यू मतलब मैंने ये किया कि मैंने अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए, खुद के वीडियो को सुनता था वापस कि वेदर जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल भी पा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। तो दिस थिंग इम्प्रूव्ड अ लॉट कि 2-3 इंटरव्यूज के अंदर मुझे आता था, आई आंसर्ड द क्वेश्चंस, देन दे वर लाइक कि मैं जो आंसर कर रहा हूँ
the same thing they are also explaining me. So it is strike to me कि maybe I am not able to properly communicate it. So this thing I think everyone should work. Even if someone's English is better, अगर ये process हम follow करते हैं to mock the interview, तो you get the better examples to explain it, and ये काफी help करता है interviews. Has helped me a lot. Correct, because if you do it for 30-45 days straight, right? If you keep on recording anything, it can be anything like how your day went, or like basically anything regarding whatever question that you have solved, right? Your explanation skill is actually improvising. There are a lot of people whom I have seen personally, जिसका communication skills are good, but then they are not able to explain things properly, or they are basically taking things too lightly and not explaining like proper in depth. So that thing is also a very big no-no, right? Because you are always, whenever you are communicating or explaining things, you have to understand that the other person does not know anything, right? That is the reason why he's asking you a question. And interview is nothing but the other person is asking you a question because he wants to know whether you know it or not. Right? कोई binary search बोला है, पूछा है, और तुम बोलो ये binary search से होगा, right? यही तो question है, right? So, Correct. so that is the thing. Yeah, nice point. Okay, Nice so point, yeah. I actually advise this for people who have a bad communication or like, but yeah, for people who have good communication skills also, they should also go through this process, right? Of recording a video, right? You can, like people who are good in communication, probably they can record not every day, but 3 days में once or 4 days में once. And if they do it for 40-45 days, जैसे 2 महीने का है, तो अगर if they do it for 15-20 times, they'll become confident with their this thing, right? And let's say whenever they are sitting for an interview, they'll be like, हाँ अब मेरे को कुछ आता है, I know how to explain things, right? Betterment में कोई बुराई नहीं है, मतलब खुद को improve करने में कोई बुराई थोड़ी. Correct. So that is the reason to say yes. भैया ने बोला ना कि तुमको कि why मतलब give each and every interview, because that is the thing, right? Like initially our students they get rejected for the first 4-5 rounds and then they start cracking rounds. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सब लोग जो भी इंटरव्यू मिल रहा है दो, ठीक है? You don't have to worry about the offer. Offer लेने के बाद सोचेंगे, right? कि कितना का ऑफर है, क्या नहीं है, right? That is very very important. अगर वो पहले से ही प्रिपेयर कर ले तो ज्यादा बेटर है. Correct. And I think मतलब इस चीज में ना एक माइंडसेट में बहुत हेल्प मिलता है. So with Sharpener, in my first 2 interviews, I straight away got rejected for a package of I think 5 or 6. So मतलब if I was applying independently on Angel List or through mails, through LinkedIn. So in 2017, when I was applying for marketing jobs, when I got straight away 2 rejections, I started to feel कि no one would hire me. मतलब क्योंकि आप कितने ही ऑप्शंस ढूंढोगे, मैं 10 कंपनीज रिसर्च करूंगा, पहली 2 ने रिजेक्ट कर दिया, तो यू स्टार्टेड टू गेट अ फील कि देयर माइट बी अ प्रॉब्लम विद यू, और मतलब इतने ही तो ऑप्शंस हैं, सारे तो एग्जॉस्ट कर दिए, हाउ विल यू गेट द जॉब नाउ. बट ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक से रिजेक्शन आता था, उससे पहले 2 मेल्स पाइपलाइन में होते थे कि कल इंटरव्यू शेड्यूल है, तो लगता था कि ठीक है आने दे, और भी बहुत सारे हैं, और वो ज्यादा ऑफर्स के साथ आते थे. तो मतलब माइंडसेट बहुत, और एक इंटरव्यू पे ना स्ट्रेस कम हो जाता है. अगर आपको पूरे अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये मिले कि पूरे हफ्ते में 2 ही इंटरव्यूज हैं, तो आप इतना स्ट्रेस में आगे देते हो ना उसको कि यार क्रैक करना ही पड़ेगा, क्रैक करना ही पड़ेगा. पर ऐसे पता हो कि कल 2 और है, परसों भी 2 और है, तो देन you are in a more comfortable atmosphere and then you perform well. That I think ज्यादा स्ट्रेस में मुझसे नहीं हो पाता परफॉर्म, तो कंफर्ट है, पता है कि ठीक है लाइफ खराब नहीं हो जा रही है, तो you perform and you give your best. Nice. So Shubham, like okay, like one thing which I also want to know over here, कि पहला offer when you cracked, okay. So what are, like I normally tell all my students कि first offer is very special, उसके बाद जो confidence आता है कि like now you can crack anything. So what was it like that? Like after that, like what was that phase like as in after cracking the first offer? First offer मतलब मेरी ना expectations, to be very honest, मेरी expectations थोड़ी high set हो गई थी. So what happened is कि in Sharpener when I joined, I was seeing people struggling with basic syntax or right approaches because people were not giving that much of time. So I started to think कि above average तो हूँ, तो पैकेज भी वैसा मिलना चाहिए. When I joined Sharpener, तो I had a thing in my mind कि I would settle for 40,000 per month. इतना अगर जॉब मिल जाता है तो that is a good thing for me.
In 1 month when I learned DSA, I saw some peer reviews on lead code. उस पे जब दिखने लग जाता था कि how you are able, मतलब you are able to lead code पे वो है ना कि आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है जो इतने लोगों ने नहीं करी, या फिर you are in that percentage of segment. तो वहां से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है. एंड देन मेरे को वो आने लगा कि अभी ठीक है, अभी 40 पे नहीं काम हो पाएगा, अभी अभी ज्यादा चाहिए. तो एक्सपेक्टेड प्रोसेस में ये जो मैंने 2-2.5 महीने काम किया, उसके बाद तो मेरा पहला ऑफर आया था, दैट वाज आई थिंक अराउंड 6.5 और 7 LP. तो मुझे लगा कि गुड, लाइफ इज स्टेबल नाउ, मतलब थोड़ा शांति मिली है दिन को. लोग हायर करना चाहते हैं आपको भी, वो बहुत अच्छा होता है जानना खुद के लिए. बट मतलब आई हैड इन माई माइंड कि इस पे सेटल नहीं करना, लेट्स मूव अहेड. और मेरा मन भी था तो स्पेशली पिंग यश की एक बार मुझे 10 से ऊपर वाले जो कंपनीज हैं उनमें रेफर करो ना. बट आई थिंक वो आप लोगों का प्रोसेस है कि शुरू शुरू में ऐसी कंपनीज से रेफर करवाओ, एंड धीरे धीरे, मतलब लास्ट में मुझे जितने भी कॉल्स आए एचआर के वो सारी अच्छी कंपनीज थी, ऑफरिंग मोर देन 15-20, मतलब उनकी कोई रेंज ही नहीं थी. वट एवर कैलिबर यू हैव विल ऑफर. हम लोग यही करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले देखते हैं कि वो कोई बंदा 6-7 लाख का पहले क्रैक कर पा रहा है कि नहीं, फिर उसको पुश करेंगे 8-9, क्योंकि अगर सीधा ही 8-9-10 लाख रुपए में तो हम लोग अपना रिसोर्स वो बस्ट कर दिया, राइट. तो पहले वो 7-8 लाख ऑफर अच्छे से क्रैक करेगा, वी गेट अ गुड फीडबैक फ्रॉम द एचआर, देन वी नो हाँ दिस पर्सन हैज द कैलिबर टू क्रैक अ 8-9-10 लाख रुपीस ऑफर, वी रेफर देम ओवर देयर, फिर वो भी क्रैक हो जाता है, फिर देन वी रेफर देम टू 12-13. जैसे तुम्हारा भी आई थिंक तो यही प्रोसेस हुआ होगा, यू वुड हैव क्रैक 10 लाख. 5 से मैं स्टार्ट हुआ था, एंड धीरे धीरे 6-7-11 तक गए, 12 तक गए, एंड देन लास्ट में ऐसी कंपनीज आने लगी कि हमारा कोई स्लैब नहीं है, यू परफॉर्म इन योर इंटरव्यू, यू डिलीवर योर टास्क एंड वी विल गिव यू व्हाट यू आस्क फॉर. तो मतलब ऐसी कंपनीज हैं. तो मतलब दिस इज अ पॉइंट ब्लैंक वेरी ऑनेस्ट एडवाइस टू एवरीवन हु इज लुकिंग टू जॉइन शार्पनर कि ट्रस्ट द प्रोसेस. These guys, I think you guys have gone through this hiring process multiple times कि पिछले 2 साल में जब से भी है तब से कितने लोगों को प्लेस कराया होगा. तो आई थिंक नाउ कि यश एंड वैभव नो बेटर देन मी कि मुझे कौन सी कंपनी में कब बैठना है, किसको क्या जवाब देना है. बस एक चीज पे मैंने इनके साथ डिसऑनेस्टी करी थी कि जब लास्ट में मेरे को कॉल्स आते थे मैं मना कर देता था, आई डोंट वांट टू सिट फॉर इंटरव्यूज. वो अचानक थोड़ा बढ़ जाता है ना खुद का ही क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप मतलब वो कर नहीं पाते, वो बहुत गलत चीज है. बट दैट हैपेंड विद मी, एंड आई थिंक उसके साथ मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स ऑल. नहीं मतलब यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, लाइक आई हैव सीन की कंपनीज कमिंग विद लाइक से लेस पैकेज, ओके, मतलब 6 लाख 7 लाख वाले पैकेज आते हैं, and then they find then they interview the candidate, the sharp like, और ऐसा होता है कि मतलब then they are like कि वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा जानता है, and then they start increasing and negotiating, because I've seen that, okay. But HR लोग में क्या रहता है नॉर्मली कि HR लोग डर जाते हैं स्टार्टिंग से कि ओके तुम ज्यादा मांग रहे हो, तो इसीलिए इंटरव्यू ही नहीं कराते. तो इंटरव्यू करा के दिखा दो तुम कौन हो, और फिर you ask for the package, right? Because there is an example also for this with me कि there was one company, HR ने मुझे कॉल किया, they asked me for my expectations. I told them कि चलेगा 6-7 के आसपास. उन्होंने मुझे कहा कि we have a maximum cap of 7, you are fitting in our criteria, let's schedule an interview. इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, देन उसी प्रोसेस में along the side also other interviews were going in. So when interviews was over, तो I told them कि I would not be able to join you guys at 7. उन्होंने मेरा पैकेज 12.5 तक रेज किया. मतलब if you will see this is double, कि ऐसा नहीं है कंपनीज के पास बाहर है. If the company is good, startup is good, they are working in a good sector, तो उनके पास सैलरी का कुछ बाहर नहीं है. This is all about कि how much you are able to deliver them in the interview, कि कितना सामने वाला कन्विंस है कि यार इस बंदे को मुझे टीम में लेना है. मोस्टली मैनेजर्स या फिर टेक लीड वगैरह यही लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो दे आर हायरिंग फॉर देमसेल्व्स ओनली कि कल को मुझे टीम में कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा. तो अगर उनको लगता है कि यू विल बी एबल टू डिलीवर दैट मच, तो दे विल स्ट्रेच देयर लिमिट्स. दैट इज द ऑनेस्ट थिंग. आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन 1-2 कंपनीज, एंड दिस इज द इंडस्ट्री आई थिंक. करेक्ट, क्योंकि पैसे है कंपनी के पास, ऑब्वियसली इफ दे आर पेइंग यू 6-7 lakhs, they have the enough budget to pay you 12-13 lakh rupees also if you are good, right? यहाँ पे if condition is very important, right? अगर else लगा तो नहीं चलेगा, समझ रहे हो? else लगेगा तो वो 6-7 भी नहीं देंगे, ठीक है? तो that is the thing, right? ठीक है, so that is very important. ठीक है, I think so. Yeah. Should we take some questions now and then come back to the questions which we have, guys?
Yeah, I think we should take some questions, and a lot of people are asking questions. I think so. Yeah, Hemant, I think you can go first. Then Praveen, then Deepak, and then Shashank. Yeah, thank you, Yash. Hello, everyone. Congratulations, Shubham, first of all. Thank you. Yeah, so I have some question uh, I want to ask first what type of question they have asked in the final interview that which you have covered. So like We won't it's be able a to answer. You won't be able to answer this because उसने इतने सारे interviews दिए हैं. last interview in recently जो for Yeah, you can just give you a generic answer. I think. I'll tell you the like most relatable answer. Ki, if there were 10 questions in 1 hour of interview, 8 were already there in the final. Some what is the name? I think mock interview. Interview preparation. So this is a very good process that these guys are following, and like probably now if you will ask me कि what were the questions, मैं भूल गया. वो ये जर्नी ना बहुत ओवरवेलमिंग होती है हेमंत. तो एक बार आप कर लेते हो, पहली सैलरी आने लग जाती है, देन यू फॉरगेट योर पास्ट कि क्या स्ट्रगल से आए हो और कि मतलब क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या आंसर्स तुमने दिए थे, अभी वो चीज भूल गए हैं. बट दिस प्रोसेस इज वेरी गुड विद दिस गाइस की यस आल्सो आस्क्ड मी फॉर ए लिस्ट की आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, और मोस्टली ये सभी स्टूडेंट्स के साथ फॉलो हुआ होगा. तो वहां पर जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिस्टेड है ना, आंसर्स तो आई डोंट थिंक इतने हैं, यश बताते ही हैं मॉक के अंदर, बट वहां पर जो क्वेश्चंस लिस्टेड है ना, मोस्टली दे आर द क्वेश्चंस जो कंपनीज पूछ रहे हैं. क्योंकि होता क्या है कि नेटवर्क वही है, मे बी विल बी एसोसिएटेड विद 100 कंपनीज, तो वो 100 कंपनीज के इंटरव्यूज किसी ने आपसे पहले दे दिए, वही लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं, वही कंपनी है, उनका वही फ्रेमवर्क है जिसपे वो काम कर रहे हैं, कितने सवाल नए पूछ लेंगे. तो इन्होंने वो लिस्ट डाउन कर ली है मोस्टली, और वो है. अगर वो पढ़ के चले जाओगे तो यू आर 60-70% कवर्ड, और उसके बाद 30 से 40% थोड़ा. सो मोस्टली फ्रंट एंड या बैक एंड से पूछा गया था. डीएसए के मतलब परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन कितने थे? डीएसए से पूछा था. डिपेंड्स, जितना जितना हायर पैकेजेस वाली सैलरी पे आओगे उतना डीएसए बढ़ता जाएगा. ओके डिड दे आस्क एनी आई मीन डीपी और एनीथिंग? हाँ, मेरे से आज तक कभी जैसे मतलब देखो कंपनी पे डिपेंड करता है. तो मेरी अभी बाकी लोगों से बात हुई, किसी को 6 लाख के पैकेज पे एक से बात हो रही थी अभी, सो 6 LPA दे वर ऑफरिंग, एंड उनसे ग्राफ में समथिंग कुछ पूछ लिया हैश मैप से रिलेटेड. उससे किसी ने नहीं पूछा है सब. मतलब हाँ ऐसा मतलब इतने कम पैकेज पे तो मुश्किल है. टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी, टोटली. मतलब Amazon भी जब अपना इंटरव्यू लेता है तो आई थिंक दे आर आल्सो सफाइज्ड विद द ट्रीज एंड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोचेस रादर देन गोइंग इन थिंग्स. कई कंपनी में यूज नहीं होता है. मतलब मैं कहीं नहीं यूज होता, भी काम ये यूज वो कब होता है कि व्हेन इंटरव्यूअर को ना जब पता लग जाता है पहले 2-3 क्वेश्चंस में कि दिस इज नॉट द कैंडिडेट आई वांट टू हायर, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जब उनको पता लग जाता है कि वो मुझे रिजेक्ट ही करने वाला है, तो उसके बाद वो ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा एंड क्वेश्चंस विल बी वेरी हायर लेवल. बट प्रॉब्लम इज नॉट विद दैट क्वेश्चन. आई थिंक प्रॉब्लम लाइज इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली. जब शुरू में ही इंटरव्यूअर ने डिसाइड कर लिया कि rather than hiring you he wants to find a chance to मतलब to reject the candidate, तब क्वेश्चंस इतने इस लेवल पे जाने लगते हैं. अदरवाइज इंटरव्यू प्रोसेस आर लाइक वेरी फ्रेंडली. लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं. मोस्टली मेरे तो इंटरव्यूज ऐसे हुए हैं कि जो सीवी में मैंने लिखा हुआ है या फिर व्हाटएवर आई एम टेलिंग इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, उसी पे इंटरव्यू हो रहा है. तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ना आई वांट टू टेल एवरीवन की जस्ट थिंक इन अ वे, जब भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने आता है तो वो तैयारी करके नहीं आ रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 3 बजे इंटरव्यू शेड्यूल्ड है तो वो 2 बजे से कहीं सर्च कर रहे हैं वो इंटरव्यू क्या क्या किस सवाल पूछना है. वो आ जाएगा उठ के वीकेंड. हाँ वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आ जाता है बाय द टाइम. वो उठ के आ जाएगा और फिर जब आप जो बोलोगे उसी में से वो कुछ पूछता रहेगा. तो जो आप बोल रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो, वो आपको आना चाहिए. ऐसे हवा में वर्ड्स नहीं फेंकने चाहिए. हो सकता है किसी बच्चे ने इंटरव्यू में फेंक दिया हो कि ग्राफ्स पे ऐसे काम किया था, तो वो पूछेगा ना ग्राफ. हाँ डेफिनेटली ये पूरा कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसे करवाना है. वो जो आंसर देगा उसी में क्वेश्चन पुट अप हो जाएंगे. वो कोई तैयारी नहीं करके आता है यार, जस्ट मेंटेन ए गुड फ्रेंडली वाइब, इंटरव्यू बहुत अच्छे जाता है. तो यू आर सिलेक्टेड फॉर अ फ्रंट एंड और बैक एंड? बैक एंड ओके. फ्रंट एंड मेरे को प्लान था बट यश ने सिखाया नहीं. बोले एक जगह कंसंट्रेट करो, मुझे फुल स्टैक बनना था एक्चुअली.
अच्छा फुल स्टैक को भी उतना ही मतलब सीटीसी देंगे और फ्रंट एंड बैक एंड को भी, या फिर डिफरेंस रहता कोई है नहीं इनमें? देखता, मतलब आई थिंक कि ये सब चीजें डोंट मैटर इन कंपनीज की, आप फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर कैंडिडेट हु कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, मतलब जो उनका काम है। ऐसा तो बहुत कम कंपनीज दिखी मुझे तो प्रोसेस में जहां पर फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों एक ही इंजीनियर हैंडल कर रहा है। आइदर दीज कंपनीज आर वेरी स्मॉल, या फिर यू आर अप्लाइंग फॉर अ मैनेजरियल रोल कि जहां पर आपको दोनों, हाँ अदरवाइज आइदर यू विल बी डेवलपिंग बैक एंड, यू विल बी डेवलपिंग फ्रंट एंड। तो कोई पॉइंट अब मुझे नजर नहीं आता। इनिशियली आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि चलो दोनों सीखते हैं, फुल स्टैक बनते हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि एक चीज भी काफी सफिशिएंट, एक में कमांड बना लो कि एक में सब कुछ आता हो, देन यू आर वेरी गुड टू गो, रादर देन दोनों में थोड़ा थोड़ा ही आता है। 30 लाख ऐसे ही लग जाएगा। यू मतलब यू कैन गेट अ 30 लाख बेस just by knowing one tech stack, तो क्यों दोनों सीखना है? Until unless you are going for an SDC position does not make sense. ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्टिंग में बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि यार ये लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं, बट दिस इज द ट्रुथ, राइट? दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। एंड यू विल एंड अप गेटिंग अ बेस्ट ऑफर, गेट इनटू दैट इंडस्ट्री, एंड देन यू फील दैट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग एल्स, देन तुम प्रॉब्ली वो सीखो, ठीक है। Correct. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सीख लो, क्योंकि तो फिर तुम दोनों में भी अच्छा नहीं बन पाओगे। एक चीज पहले अच्छे से करो, ठीक है। जैसे अगर कोई भी चीज कर रहे हो वो अच्छे से करो, गेट अ गुड ऑफर पैरेलली ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, और फिर वो दूसरा चीज सीखो, सो दैट तुम दोनों पे कमांड बना पाओ। क्योंकि अगर तुमको दोनों चीज तुमको आता है और तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा हो तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो, दैट इज एज गुड एज नॉट नोइंग इट, ठीक है। तो या डेफिनेटली मोरोवर शार्पनर का प्लेटफॉर्म हमेशा खुला रहेगा, तो कभी भी आ जाओ, हाँ। सीख लो, कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं। नहीं, अभी बहुत टाइम है, जैसे मतलब जॉब के साथ सबको बहुत टाइम मिलेगा, सीखो ना जितना सीखना है। एक बार पहला जॉब निकाल लो तो खुद पे भी थोड़ा Oh, कॉन्फिडेंस। yeah. So are you planning to learn DB, Shubham? I mean, to get in the product-based company. कैन यू रिपीट? Are you planning to learn DP in Sharpener to Dynamic get in the programming. product-based company? व्हाट इज डीबी? डायनेमिक प्रोग्रामिंग। Dynamic programming. ये इसको लोग बहुत शुभम को बहुत कुछ और लगा, Trees, शुभम graph, and all. I को। mean, अरे ये लोग बहुत क्या कहते हैं उसको, बज़वर्ड्स यूज कर रहे हैं भाई। तो तुमने पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया क्या, मतलब जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं? हाँ DS से ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो पहले बैकएंड वगैरह कंप्लीट कर लो, ये बज़वर्ड्स वगैरह बाद में तो स्टिल मतलब मुझे if you शायद want you मुझे can. शायद यश ने ऑफर ही नहीं किया कि तुमको भी सिखाना चाहता है, हमें तो सिर्फ बायस रहा है थोड़ा हमें। अच्छा। Okay, by the way, what company का नाम क्या है जिसमें सेलेक्ट हुआ? वेल्यूफाई। फिलिपिन। वेल्यूफाई Valuefy, yeah. Okay. I'll type it over here. जहाँ ज्वाइन। वैसे Valuefy में there are other people also working there. अरे हाँ, शार्पनर I forgot to mention this. This is also very good thing कि कंपनीज में जहाँ जा रहे हो वहाँ पर कॉलेज की तरह एलुमनाई मिल रहे हैं भाई। when you join, मेरे को कुछ काम था तो I asked यश for some reference कि इधर कुछ इसके बारे में पता है क्या। उधर एक से कनेक्ट हुआ तो पता लगा कि देयर आर मल्टीपल पीपल, जैसे कॉलेज में सीनियर्स आपके हायर होके आते हैं, वैसे अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग टीम्स में आपके शार्पनर से आए हुए लोग हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प भी कर देता है। मतलब अभी करंट कंपनी के अंदर तो देयर आर पीपल हु आर लाइक एक्टिवली हेल्पिंग ऑल्सो कि ऑनबोर्डिंग को, मतलब कुछ दिक्कतें आती हैं सिस्टम सेटअप करने में एंड एवरीथिंग, तो दे आर जस्ट हेल्पिंग, लाइक जैसे कोई कॉलेज का जूनियर ही हो, हमारे ही पीयर से आया है, चलो। तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एवरीवन इज सो फ्रेंडली, और सबका ना एक मतलब क्रेडिट बैक है कि यार शार्पनर से आए हैं, कोई और भी शार्पनर से आया, वो नहीं होता छोटे शहर से जब दो लोग आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं, वो वाली चीज तो है यार, मतलब आएगी, सबको मिलेगी आई थिंक कंपनी से। nice, nice. So, okay. Shubham, you can go Okay, next. thank you, Shubham. Yeah, thank you. Sure, Hemant. Shubham, you can go next. Hello. Hi, Shubham. Hi, Praveer. So I have a question. Did they ask you about your mechanical or previous experience about anything in the interview? हाँ, मतलब if you mention in CV तो they will be asking, even they will be going deep also कि वहाँ पर काम कर रहे थे कुछ तो क्या अटका। अभी इंटरव्यूज का एक बहुत सही प्रोसेस आ गया है कि यू कैन नॉट फेक द एक्सपीरियंस। ऑनेस्ट है कि अगर सामने वाला स्मार्ट है ना तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया, सामने वाला ये पूछेगा कि तुम अटके कहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा इंस्टेंस बताओ इन द लास्ट 1.5 year जिसमें तुमको प्रॉब्लम आई थी। तो इफ यू हैव एक्चुअली डन दिस देन यू कैन गेट थ्रू दैट। वो चीज तो होता है, मतलब प्रीवियस तो So was it? So is it worth putting
in your resume about your previous experience? Does it help, or should I skip it? अगर कहीं पर मतलब what I believe कि अगर कहीं पर सही में टाइम दिया है and if you have delivered a lot मतलब your caliber, तो obviously mention करना चाहिए. मतलब everything is justifiable even if you work for a company for 3 months, but 3 महीने तो काम किया ना, 3 महीने अगर honestly अपना input दिया है तो you should mention this. जस्टिफाई कर दोगे कि क्यों छोड़ा या फिर इतना जल्दी क्यों स्विच किया, दैट इज मतलब ऑनेस्टली अपने आंसर्स दो. अगर उसको तुम्हारे से वाइब मैच होगी इंटरव्यूअर की तो ही विल गेट अलोंग. बट एटलीस्ट अगर कुछ एक्सपीरियंस लिया लाइफ में तो मेंशन इट, बिकॉज एक्सपीरियंस का पैसा है यार. कि मेरे को मानोगे नहीं, द कंपनीज दैट वर सेलेक्टिंग मी फॉर ऑल्सो कि आपके पास नॉन टेक का भी एक्सपीरियंस है, सो यू आर गुड एट मैनेजिंग पीपल ऑल्सो. मतलब वो चीज भी मेंशन. तो मुझे कभी ये चीज लगा नहीं था कि मैं कहीं पर एसडी पोजीशन पे अप्लाई करूंगा और वो मुझसे मार्केटिंग का बोलेगा कि अच्छा आपने मार्केटिंग टीम में मैनेज करी तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी जॉइनर्स. तो यू डोंट नो, बट एक्सपीरियंस हेल्प करता है. मेंशन दैट. And one more lead point, when I stumble upon a new question in lead code, or for example I'm searching something, so I just freeze for a second. मतलब new question is like something alien to me. मतलब मैं comfortable नहीं हो पाता हूँ उसके लिए. तो is it normal? जो चीज मुझे बोल रहे हो वही इंटरव्यूअर को बोल दो. अच्छे इंसान ही होते हैं, वो भी समझेगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देगा. Okay. Thank you. Sir, I have one question. Can I ask? Yeah, go ahead, Nathan. Sir, my question. Hello, sir. First of all. Hi. Sir, मत बोलो. Okay. So, sir, my question is, whenever I stuck in some question, so I went on YouTube to resolve it. So, in starting, you were saying that whenever you YouTube any question, you just wasted your time watching some bloggers video. So sir, मेरे साथ भी ऐसा होता है, but mostly video I have seen on YouTube is जो techies हैं sir, they are focusing that if you are good at DSA, that you can crack any FANG interviews. So DSA is most important because sir, right now I'm at DSA on array section, and I'm finding it so hard to crack all the questions. So sir, can you I don't believe this. FANG companies what you are mentioning, हो सकता है वहाँ पर ये चीज होती है. वहाँ पर तो यार मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के भी राउंड्स होते हैं. तो that should be your second field. Sir, my question is only that DSA is so much important, or you can just have basic knowledge of DSA. सीख के जाओ. एरेज तक तो सबको सीख के जाना चाहिए. एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज यही चीज काम में आएगी जॉब में भी. Okay. अगर ऑब्जेक्ट्स नहीं आते, एरेज नहीं आते, तो फिर जॉब में जाने की बात दिक्कत आएगी. तो रेदर देन अभी थोड़ा माथा मार लो. अभी एटलीस्ट देयर इज समवन हु विल हेल्प यू. यश और वैभव से अभी पूछ सकते हो ना. अभी प्लेसमेंट होने के बाद में वापस पूछने होगा कि वैभव मैंने तो स्विच कर मतलब स्किप कर दिया था ऑब्जेक्ट, अभी बताओगे क्या? ये भी बोलेंगे क्या पागल आदमी है, उसी वक्त सीख लेता. तो एटलीस्ट ऑब्जेक्ट तक तो आई थिंक सबको आना चाहिए. एरर ऑब्जेक्ट्स और इन सब के जो ऑपरेशंस, इनके ऑप्टिमाइजेशन जो है, ये जॉब में बहुत काम में आता है. इससे ऊपर सेकंड फेज के लिए प्लान कर दो कि अभी फर्स्ट फेज में इतना डीएसए सीख लिया और बाकी जो क्वेश्चंस इससे शार्पनर की मॉड्यूल पे हैं वो करके चले गए, एंड देन सेकंड फेज के अंदर अच्छा सीख के फार्म कंपनीज में अप्लाई कर देना. मतलब आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए. पहले अगर मेरे हाथ में 5 लाख का ही ऑफर नहीं होता तो मैं कहाँ 25 लाख का अमेजोन का प्लान कर रहा हूँ. थोड़ा तो मतलब ग्रेजुअली प्लान करना चाहिए. Got it. Sir, my second question is to you that you were said that experience mention करना सही जरूरी है. यश हेल्प कर देंगे. मतलब मेरा सीवी यश ने बनवाया था. अच्छा. मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब किया था इससे पहले. कोडिंग बैकग्राउंड से मैं भी नहीं हूँ सर. तो क्या जरूरी है सर एडमिनिस्ट्रेशन का अपना जो भी एक्सपीरियंस? मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन में वर्क किया था कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे. Yes would be the right person. वो मेरे पास आओ, मैं हेल्प करूंगा. मतलब एक्चुअली द थिंग इज भैया ने काफी जन को ऐसे बुक करवा दिया है, राइट? जैसे तुम शुभम एक ही एग्जांपल है, राइट? तो वी हैव गॉटन मोर दैन 200 प्लस पीपल प्लेस. ठीक है, तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है. तो प्रॉब्लम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाले को कहीं फिक्स करेंगे. ठीक है, तो टेंशन मत लो. ठीक है, थैंक यू सर. You were asking me ना, मेरे को अभी दिख रहा है कि किस किसने हेल्प किया. पुनीत मुझे दिख रहा है.
All we Shubham, doing. Hello. I'm Ronak Hello. here. First of all, Yeah. congratulations for joining into the new company. Thank you. Am I audible? Yeah, sure. Yeah, so first thing is that when we are stuck in a particular module, राइट, तो जैसे बाइनरी सर्च का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमको पता है कि बेसिक अप्रोच ये है, लेकिन उससे रिलेटेड जो उसके उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो एकदम से आइडिया नहीं आता कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं या तो खुद को ही ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है या कहीं पे जाके देखना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑनेस्टली मेरा प्रोसेस बता हाँ, जो कि मतलब बहुत गलत है, बट इट हेल्प्ड मी टू प्रोसीड। एक ही जगह अटकने से अच्छा है कि मैं ऐसे आगे नहीं। तो शार्पनर के मॉड्यूल पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस लिस्टेड हैं। वो लीड कोड पे जाओगे तो लीड कोड पे देयर इज डिस्कशन पॉइंट्स आल्सो कि जहां पर ऑलरेडी लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, मुझसे नहीं होते थे। ठीक है, नहीं आता यार, बेसिक सी प्रोग्रामिंग नहीं आती, तुम अभी सीधा ग्राफ और मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग इक्वेशंस को, तो उधर गया, सॉल्यूशन देखा, किसी और लैंग्वेज में देखा रेदर देन जेएस, और लैंग्वेज का देख के उसका लिख लिया कि उसने क्या फॉलो किया है एल्गो, एंड देन उसको अपनी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर लिया। तो शुरू के हर प्रॉब्लम के शुरू के 7-8 दिन ऐसे चले गए थे कि मेरे को लॉजिक किसी ने बता दिया है, किसी डिस्कशन से मैंने आई हैव फिगर्ड आउट द लॉजिक कि दिस इज द वे यू विल बी सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन आपने जीएस में उसको इम्प्लीमेंट खुद से कर लिया। तो वहां से प्रोग्रामिंग इंप्रूव हुई कि आपकी पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बन रही है, एंड देन व्हेन यू सॉल्व अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस ना कि किसी भी टॉपिक के, और किसी और के लॉजिक देखते हो कि अच्छा उसने ऐसे सॉल्व किया, तो आई डोंट नो कि ये होता कैसे है, बट ये हमारे साथ मेंटल मैथ के अंदर ही है कि 10 सॉल्यूशंस देखने के बाद 11वां क्वेश्चन इसका कुछ ऑल्टरेशन भी देखोगे ना, तो यू वुड हैव ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट 80% कि ये वाला फ्लो मेंटेन करना। वो मैंने भी ये चीज ना, आई थिंक हमको कहीं ब्रेन लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा, ये चीज अपने है यार। ये एक्चुअली बहुत सही टेक्निक है। दूसरे लैंग्वेज में देखो, सो दैट लाइक डोंट से इट द सेम लैंग्वेज, दैट्स द ट्रिक ओवर हियर, दैट्स अ गुड पॉइंट शुभम यार। तो एल्गोस वगैरह जितने देखते जाओगे ना कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं, उतने ही जल्दी तुमको नेक्स्ट प्रॉब्लम आने पर स्ट्राइक करेंगे, और ये अपने आप होता है। मतलब इसको मैं जो आपने सवाल पूछा, ये सोच के, इससे डर के मैंने कॉलेज में प्रोग्रामिंग छोड़ दी कि यार मुझसे ये चीज नहीं फिगर आउट हो सकती। अगर किसी ने बोल दिया कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग के अंदर 18 कैरेक्टर्स हैं, उनमें से 6 रिपीटेड है, तो सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स निकाल के दो। तो मुझे लगता था ये चीज मैं खुद से कैसे सोच सकता हूँ, बट नहीं है, वो आता है, अपने आप आ जाता है टाइम के साथ। आप एक definitely applied. Second question is that for example आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और आपका एक्सपीरियंस कंपनी में है, मतलब आईटी कंपनी में ही है, लेकिन मतलब जॉब रोल इतना अच्छा नहीं है, तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए कि नहीं? जैसे आपने बोला एक्सपीरियंस की ही लाइक सीटीसी यू गेट रेज एंड उसके पैसे होते हैं, तो उसका हमको प्लस पॉइंट मिलेगा या नेगेटिव तो नहीं जाएगा इंटरव्यू? यार इस चीज पे ना आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बिकॉज मतलब अभी देखो मेरे को कितना टाइम हुआ है, मैंने इस चीज के लिए यश हेल्प की थी, उन्होंने मेरा सीवी कटवाया है, जुड़वाया हुआ है, जो भी करवाया है कि ये मेंशन करो, ये मत करो। तो अभी मैं तुमको वो, ये तो वो वाली बात हो गई कि नो, क्या कहते हैं उसको, नो सीखिए से तुम अपना सीख कर करियर क्यों खराब करना चाह रहे हो। सीवी जब पूरा मॉड्यूल हो जाए तो बैठ के बनाना, वो बता देंगे तुमको कि जिस कंपनी में तुम अप्लाई कर रहे हो उधर के कंसर्न्स क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो उनको पूरा आइडिया है कि वो 100 कंपनीज में जहाँ तुमको रेफर करने वाले हैं वहां पर क्या चीज देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैटर करता है। तो आई थिंक सीवी वाइज क्या मेंशन करना है, इंटरव्यू में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, यश इज द राइट पर्सन, गा तो इज द राइट पर्सन। मैं खुद नहीं रिजॉल्व करता हूँ ये सीवी वाला डाउट्स, मैं खुद रिजॉल्व नहीं करता हूँ। यश भैया को भेजता हूँ, भैया गलत एडवाइस मत दो यार। मतलब अभी भी आपको भी शायद आपके पीयर्स मैसेज करेंगे कि ये वाले एरर बता दो, अगर आता है तो बता दो, नहीं आता तो साथ में सॉल्व करो, गलत मत बता के दो। मैं भी आपको गलत नहीं बताऊंगा कि यार ये चीज मेंशन कर दो शुरू में, देन फिर बोलोगे कि यार क्या हाथ में था, गलत करा आगे चला। या तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपका नोट्स बनाने का स्ट्रेटेजी क्या था? क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा, एक हफ्ते बाद वापस वहीं पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था, क्योंकि एक्चुअली यू डोंट रिमेम्बर कि मैंने पहले क्या पढ़ा था। एक्चुअली तो आते नहीं, मतलब वापस वहां पर नहीं, हमें लगता है कि हम वापस वहां आ गए। एक बार कोई चीज सीख ली ना तो देयर इज सम, मतलब वो है दिमाग में कहीं ना कहीं। मुझे भी ये लगता था यार 7 दिन हो गए, 7 दिन में मैं डीएसए का पहला सवाल तो भूल गया, हाउ डिड आई सॉल्व इट। मैंने आपको अप्रोच बताई ना कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं किसी और का एल्गो देखता था, उसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करता था, एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व इट। 10 दिन बाद देखता था उस प्रॉब्लम के बारे में मुझे कुछ आता ही नहीं था कि ये सॉल्व कैसे करी थी, मैंने सबमिट कैसे कर दिया शार्पनर के मॉड्यूल पे, बट देयर इज, मतलब दिस थिंग इज लाइंग समवेयर इन कॉन्शियस।
तो जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक्स वगैरह होते हैं इनको तो मैंने हाथ से ही नोट्स लिख के कॉपी में लिख लिए थे। बाकी अदरवाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो कि ना जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मतलब नेट पे ढूंढते हो उन सब की स्क्रीनशॉट्स ले लो और गूगल शीट के अंदर अटैच करते जाओ साथ के साथ। वो एक बहुत लंबी शीट बन जाएगी पूरी नोट्स की, जिसको हर बार इंटरव्यू से पहले रिवाइज कर लेना। इट वुड हेल्प यू लॉट। हर चीज आप नहीं लिख सकते, कोड थोड़ी लिख दोगे, तो कोड का स्क्रीनशॉट ले लिया, अटैच कर दिया गूगल शीट में। गूगल शीट के नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो आई यूज्ड टू फॉलो दिस कि डॉक्स के ऊपर स्क्रीनशॉट लिया, अटैच किया, और वैसे मतलब बहुत लंबी वो बन गई थी जिसको सिर्फ 2-3 बार रिवाइज करना है, उसके बाद तो आप 5 मिनट में वो पूरी शीट देख जाओगे, तो आपको सब कुछ पता है कि आज तक आपने क्या क्या कर लिया। तो दिस थिंग इज ऑल्सो आई थिंक वेरी सीरियस कि जितना शार्पनर में भी आप सीख रहे हो ना, उस चीज को लिस्ट डाउन कर लो कि मैंने ये प्रॉब्लम्स मेरे को आई थी, मैंने इसको इसे इंप्लीमेंट कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया। तो मतलब आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। जैसे अभी तो मैं नाम भी भूल गया हूँ, टोकन, JWT ऑथराइजेशन, बहुत सारी चीजें ये लोग प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग मतलब इम्प्लीमेंट करवाते जाएंगे सीक्वल के अंदर, किसी डेटाबेस के अंदर। तो वो सब चीजें ना लिख लो कि तुमने ये कर दिया है, क्योंकि इंटरव्यू में भूल जाओगे बताना ये तुम कर चुके हो। वो सामने से पूछ लेगा तो तुम्हारी किस्मत कि यार हैव यू वर्कड ऑन दिस, तो आप कह दोगे हाँ हाँ आई हैव वर्कड ऑन दिस। बट रेदर मतलब बेटर अप्रोच क्या है कि ये सब चीजें तुम जब प्रोसेस में थे तभी लिख लिया कि तुमने ये चीज सॉल्व करी है, यू हैव एक्सपीरियंस ऑन दिस, एंड जब इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन पार्ट हो रहा है तो उसी वक्त बता दिया कि आपने इन इन चीजों पे काम किया है। तो बहुत अच्छी इमेज छोड़ता है। जैसे AWS इतना बज है ना कि इंटरव्यूअर ऐसे पूछता है कि सो AWS आता होगा तो बहुत ही सही है। और AWS पे मानोगे नहीं 3-3 प्रोजेक्ट्स होस्ट करवाए हैं यश ने मुझसे कि इनको डिप्लॉय करो, इनको डिप्लॉय करो। जब कंपनी में जाओगे तो सीनियर डेवलपर्स को नहीं आता कि AWS पे कंसोल कैसे खोलते हैं, वो इन्होंने करवाए हैं। लेकिन ये चीज अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे ही नहीं तो उसको सपना थोड़ी आएगा कि आपने इस पे काम कर लिया। ये चीज का डॉक्यूमेंट करते चलना चाहिए। अपने आप को बेचना आना चाहिए, सेल करना आना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आपने क्या क्या कर लिया, मतलब दैट इज लिखते जाओ। करेक्ट। और मतलब आपने कोई अलग से प्रोजेक्ट बनाए थे शार्पनर के मॉड्यूल के अलावा? जो है जो बोल दिया कर लो, इनका नहीं चले तो खुद से सोचेंगे ना। जब इन्हीं का इतना चल रहा है तो क्यों खुद से और मेहनत करनी है। या थैंक यू सो मच शुभम। हेलो एक एक करके शुभम अग्रवाल, यू कैन गो नेक्स्ट। यार शुभम, हेलो या शुभम टेल शुभम भाई वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आई थिंक पुनीत इज रेजिंग हैंड, उसने मेरा हैंड भी किया था। हाँ भाई जल्दी, उनको बोलूंगा। पूरी कुछ कह रहे हो क्या? शुभम भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी खा लिया। लेट देम आस्क फर्स्ट, कोई बात नहीं मैं पूछ लूंगा। ले वॉइस इज ले नॉट दूध खा ले। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली या पुनीत गो अहेड। या पुनीत मेरा क्वेश्चन एक्चुअली लाइक सभी से है कि जैसे मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था तो कुछ दिनों में इंटरव्यू से मैं इंटरव्यूज कॉल आ रही थी मेरे पास। अभी मेरे पास और लाइक अच्छी कॉल्स एंड ऑफर होते हैं, लाइक मैं इंटरव्यू से ही बोर हो गया था, लाइक मैं इंटरव्यू और नहीं दे पाऊंगा। तो उस चीज लाइक शायद वो फेस शुभम तुमने फेस किया होगा, उस चीज को कैसे लाइक बार इंटरव्यू दे दी थी, लाइक मैं किया कि नहीं मैं इससे ज्यादा इंटरव्यू नहीं देता। मेरे घर वाले भी देख रहे थे कि मेरा मुंह नहीं नहीं ये छोड़ दे, कोई बात नहीं पुनीत, जितना तेरे पास ऑफर है तो एक्सेप्ट कर ले, काम करना स्टार्ट कर दे। मेरे पास मेरे पास कैलिबर था, मेरे पास नॉलेज थी, मैं अभी और भी और इंटरव्यू देता। मुझे पता था कि लाइक क्योंकि जितने भी मेरे इंटरव्यूज हुए थे काफी अच्छे इंटरेक्टिव इंटरव्यूज थे। लाइक मैंने इंटरव्यू से सभी से काफी अच्छे से बात की थी, काफी इंटरेक्टिव इंटरव्यूज थे। तो बट मैं स्टार्टिंग में था जोश था लाइक हाँ फाइनली मुझे इंटरव्यूज देने हैं एंड मुझे कॉल्स आ रही हैं, और दिन में इतनी कॉल्स एक्सेप्ट करता था लाइक हाँ कब आपसे इंटरव्यू ले, मैं पता कल परसों 2 बजे 4 बजे, ये चीजें स्टार्टिंग में बहुत रही थी। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि नहीं यार अब नहीं, अब फोन आ रहा है किसी HR का, यार फिर से फोन आ गया तो मैंने तो पुनीत को यही बोला था, कि अभी कितना तुम्हारा 7 या 8 का ऑफर लगा रहा है पुनीत, वो तो याद भी नहीं। ठीक है, तो वही है कि मतलब अभी ये वाला क्या है ना, एक बार तो कंपनी में घुस जाओ, 3-4 महीने काम करो। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ भागा जा रहा है, राइट? 3-4 महीने काम करो, फिर से तुम्हारा जब माथा सही हो जाएगा फिर से गन स्टार्ट सेटिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, शार्पनर इज नॉट गोइंग अवे एनीवेयर, राइट? हम लोग हैं, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, तो वहां पे इंटरव्यू लगाना चालू करवा देंगे। ठीक है, तो यही है, दिस इज ऑल
वाला प्रोसेस, ठीक है, तुम जितना इंटरव्यू दोगे उतना अभी आई बिलीव शुभम फिर से इंटरव्यू देना चालू करे तो फिर से थोड़ा थोड़ा सैलरी बढ़ रहेगा। तो दिस इज ऑल प्रोसेस, ठीक है, एक्सपीरियंस काउंट, ठीक है, सब कुछ काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वही है। शुभम तुम्हारा Someone is asking in chat कि पुनीत तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? नहीं है, टेक नहीं है उसका भी, वो भी मैकेनिकल कोर बैकग्राउंड से सारे नो प्रोग्रामिंग वाले हैं, डोंट वरी, ज्वाइन करो, सीखना शुरू करो। एटलीस्ट शुभम का एक्सपीरियंस था, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं था, मैंने 3 साल ऐसे ही लाइक फ्री ही निकाले हैं। ओके, ये आपका डिफरेंट फेज है, शुभम, आपका डिफरेंट फेज है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि शुभम दांगी हैज क्रैक अ वेरी गुड ऑफर, तो तुम्हारा को भी उतना टेक समथिंग व्हिच इज गुड फॉर यू, ठीक है, उसमें काम करो, ठीक है, एक्सपीरियंस लो, ठीक है, और बिकॉज देखो सबको 1 साल के बाद 20 लाख रुपए के ऊपर कमाना है, ठीक है, एंड दैट इज मतलब इवन इफ यू स्टार्ट अ करियर इन अ गुड कंपनी, ठीक है, गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छा काम कर रहे हो, वो 20 लाख रुपए तुमको भी मिलेगा, राइट, ठीक है, बट वो एक्सपीरियंस विल मैटर अ लॉट, राइट, तुम कंपनी में जाके सीख रहे हो कि तुम ऐसे ही मस्ती कर रहे हो उधर, मतलब मस्ती भी करो, सब कुछ करो, राइट, बट सीखना, नॉलेज गेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रादर देन जस्ट स्पेंडिंग 1 month 2 months जस्ट गिविंग इंटरव्यूज, ठीक है, दैट आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि देखो तुम जितना इंटरव्यू दोगे चांसेस बढ़ते रहेंगे, राइट, दैट इज ऑलवेज देयर, राइट, बट अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये कंपनी भी सही है, टेकिंग दैट ऑफर एंड गेटिंग एंड स्टार्टिंग वर्किंग देयर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah, I think that's good. Guys, I think अभी 4 minutes I think only we have before Shubham goes. So let's quickly do a rapid fire with Shubham quickly, guys. Yeah, Bilal, you can go next. Nizam then. Yeah, Bilal. Hello. Hi. Hello, sir. Yeah, Shubham. Yes, Sarman. yes, and Baba, sir, and Shubham bhaiya. Good afternoon. Yeah, Bilal. Yeah, go ahead. Okay. And so I was I wanted to know that this question is for like us as well. I mean for you and as well as Shubham bhaiya. So actually, I was thinking like I started React, and now that I'm seeing lots of people who are from the back end, they are getting a higher salary. So my mind is kind of getting distracted, and I was thinking like, is there any? I mean, one single person who get selected above 10 or like Yeah, 10 actually, like. Bilal, for you, we'll be calling someone next to next time. Basically, someone would be coming and she would be explaining her journey. So she's gotten like around 5 offers above 10 LPA. She's for front end. So there are a lot of people. Okay, like next. In my company, I know a fresher, but just 6 months of experience, cracked about 20 from React. Yeah. ऐसा नहीं है कि बैक एंड और फ्रंट एंड में पैसे का डिफरेंस नहीं है, इट इज अबाउट स्किल्स। फ्रंट एंड पे अच्छा कर लो, अच्छा मिलेगा। Oh, okay. So that was my question. Thank you. By the way. Yeah. Nizam, you can go next. Yeah. Let's. We Yeah. have 2 more minutes. Okay, Nizam. Hi, Shubham. Congratulations for your job. Am I audible? Yeah, thank you. Yeah. Yeah. What? How was your audition part? How it went? Like, did you realize before the module or? टाइम ही नहीं मिला। I tell you the exact scenario. Sorry? Around 1 or 2 PM on Sunday afternoon, मेरा लास्ट मतलब मॉड्यूल का फिनिश था। वो हुआ नहीं था एक्चुअली, लास्ट टास्क पेंडिंग था। यश ने देखा एंड ही सेड कि हो गया। मैं कहा अभी 2 चीजें बची हैं, क्रॉन जॉब से रिलेटेड कुछ लास्ट असाइनमेंट है जो मुझसे हुआ नहीं था, मैंने किया भी नहीं। तो यश ने बोला हो गया कंप्लीट है, अपनी सीवी भेजो। आई वाज थिंकिंग कि अभी सीवी पे काम वाम होगा। मैंने सीवी भेजा, इन्होंने कुछ 1-2 अपडेट मांगे, फिर मुझे लगा इस पे मॉक होगा, इन्होंने रेफर करना स्टार्ट कर दिया और मंडे इवनिंग से तो कॉल्स आने लग गए, तो टाइम ही नहीं मिला रिवीजन का। तो फिर मतलब वो ये प्रोसेस के अंदर ढल गए तो रोज। Yeah, but Shubham, I have a mock interview recorded. Okay, I'll send that to you. All of you. He performed really well in the mock interview. He answered all the questions. I was like, "You're all sorted, man. अभी इंटरव्यू में बैठो एकदम, अभी मचा दोगे तो." So I'll share you the mock interview which I took for Shubham. Yeah, guys, on the Discord channel. ठीक है, guys. So there was one person, I remember, सुबह का मंडे से हो चालू हुआ। एक बंदे मंडे रेज्यूमे बनाया, मंडे या ट्यूसडे पता नहीं कोई वीकडे रेज्यूमे बनाया, ठीक है, सुबह उसको ऑफर आ गया,
and he was like, सही sir ये offer सही में आया है कि फर्जी offer है? ठीक है, because he just gave 2 interviews, उसी टाइम उसका 2 इंटरव्यू हुआ, 3-4 बजे तक रेज्यूमे बनाया, मैंने तो रेफर किया, ठीक है, 6-7 बजे तक सारा इंटरव्यूज खत्म उसका, और वो उसको सुबह ऑफर भी आ गया, ठीक है, एंड नेक्स्ट डे ही लाइक he was telling about his experience. मैंने बोला तुमने अभी जिंदगी देखी कहाँ है इंटरव्यू के, रिजेक्शन भी होती है भाई, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ईमानदारी, मतलब नो इंटरेस्ट एनीथिंग, बट एक बार मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद जो प्रोसेस है ना शार्पनर का, आई लव दैट, मतलब बहुत सही, रेफर्स और स्पीड एवरीथिंग बहुत सही है। तो एक बार वो फीस, लेकिन वही है ना, मतलब आप अभी सवाल पूछ रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव नॉट इवन स्टार्टेड द जर्नी, उससे पहले ही इतने सवाल लेके बैठे हैं। व्हाट आई वांट टू से इज कि 2-2.5-3 महीने इन्वेस्ट करो, कंप्लीट द मॉड्यूल, उसके बाद एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट क्लैरिटी व्हाट आई एम, पुनीत, मी एंड अदर पर्सन्स हु लाइक गॉट प्लेस्ड रिसेंटली। तो हमको ये क्यों लग रहा है, उसका एक रीजन यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द मॉड्यूल हेल्प बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी भी इवन आई रिमेम्बर द फर्स्ट कन्वर्सेशन था यश के साथ, व्हेन आई गॉट द ऑफर आई कॉल्ड यश एंड इन्फॉर्म्ड हिम, तो उनका ये था कि सून वी हैव टू प्लान अबाउट 30, एक साल काम कर लो, एक साल काम कर लो एंड देन वी विल प्लान अबाउट 30। तो ये चीज ना बहुत प्यारी है कि इवन आफ्टर यू गेट द प्लेसमेंट यू पे देम बैक इन द इंस्टॉलमेंट्स, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम कौन हम कौन, दे आर स्टिल थिंकिंग, एटलीस्ट थिंकिंग। अब उसके बाद तो आपके ऊपर है कि आप कितना कॉन्टेक्ट बैक करते हो, बट दे आर थिंकिंग कि करियर में आगे इसी लाइन में चलाना है कैंडिडेट। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। थैंक्स यश फॉर दिस, थैंक्स वैभव। We have actually started that also, right? ठीक है, हमारा recurring model है, right? So it's basically ठीक है, people who have like जो एक साल पहले place हुए थे, we have started getting them offers right now. इनमें हम लोग टाई अप्स है ना ऐसे इन जनरल, मतलब बहुत ज्यादा ही कंपनीज, तो मतलब तो यार these HRs are like after asking कि अच्छा कैंडिडेट दो, अच्छा कैंडिडेट दो, तो मैं बोला मैंने ढूंढ रखा है, थोड़ा टाइम दो मुझे। हाय भैया, Okay, yeah, go ahead, Priyansh. हाय भैया, Okay. मेरा शुभम भैया, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब आपके इंटरव्यू के टाइम पे आपको नोड के टास्क मिलते थे कि मतलब थ्योरी बेसिस क्वेश्चंस होते थे, मतलब दोनों है, मतलब किसी का इंटरव्यू में जब अच्छा परफॉर्म नहीं करता था तो मेरे को टास्क दे देते थे, अच्छा परफॉर्म करता था तो टास्क मतलब कुछ छोटा सा डेवलप करने के लिए दे दिया। अगर इंटरव्यू के दौरान ही चल रहा है तो दे विल आस्क जस्ट स्ट्रेट अवे कि एक सर्वर क्रिएट करो, रेदर देन यूजिंग एक्सप्रेस नोड पे सर्वर क्रिएट। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि आपने जब पहला क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, मतलब दिस इज आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कि अगर आपसे फोर्थ क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछ लिया गया है जो आपको नहीं आता है, या फिर ऐसा पूछ लिया गया जो बाकियों से नहीं पूछा गया है, तो फोर्थ क्वेश्चन और इंटरव्यूअर की गलती नहीं है, आपने पिछले 3 क्वेश्चन में गलती कर दी है। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस, मतलब ट्रूली कोई भी ये सोच के नहीं आता कि आपसे आज बहुत टफ पूछूंगा, आपका दिन खराब कर दूंगा। कोई भी ये नहीं सोच के आता कि आज इसको ज्वाइन ही नहीं करवाऊंगा। वो हम ही कहीं ना कहीं गलती कर देता है, मतलब पहले 2-3 सवाल में, उसके बाद फिर वो अपना मन बना लेता है, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो कंप्लीट करने के लिए टाइम देते हैं ना सभी इंटरव्यूअर का यार, कोई प्रोसेस लंबा खींचना चाहता है अगर तो मतलब तुमको दे देगा कि एक दिन बाद डेवलप करके लेके आना। और जब मतलब वही कह रहा हूँ ना कि इस पे इतना मत सोचो, जब हाथ में ऑफर होगा और वो तुमको 2 दिन का टास्क देगा ना, तो यू आर इन अ लिबर्टी टू से कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब आई हैव ऑनगोइंग पैरेलल ऑफर्स, आपको ये करवाना है तो लीव इट, आई लीव द जर्नी ओवर हियर ओनली। तो ये चीज ना टाइम के साथ आएगी, जब आपके पास ऑफर होंगे, जब आप एक बार इंटरव्यू प्रोसेस में जा चुके होंगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार कोई इतना भाव खा रहा है अगर इंटरव्यू, कि छोड़ो ना उसको, शार्पनर वैसे भी इतनी जगह पे रेफर कर रहे हैं, इतनी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, इसके साथ क्यों 2 दिन खराब करना है, इतने में तो मैं 3 इंटरव्यू और दे दूंगा। ठीक है, बट उसके लिए हाथ में कुछ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास एक भी ऑफर नहीं है, वो पहले इंटरव्यूअर को स्वैग में जवाब दे दे रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। वो तो पहले तो ऑफर लेना ही पड़ेगा ना। Hello. Okay. Yeah, Rishikesh, you can go next. Yeah. Sir, what kind of project that Shubham Bhaiya did to crack this? That's in the sharpener placement model. Well, sorry, sharpeners. All the dashboard is there. Yeah, Dashboard you will actually see that there are names written. We have not written कि Node.js पढ़ोगे ये पढ़ोगे. You have everything written over there, right? This project you'll be making, and gradually when you're making that project, you'll be learning end to end, like SQL, NoSQL, all of those things. You'll be learning gradually with that. मतलब मैंने अभी ना सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि AWS या कोई मटेरियल, मतलब एनी डेटाबेस ORM, ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जिनमें छोटी छोटी पॉइंट्स में असाइनमेंट्स में लिखा हुआ है
इन द प्रोजेक्ट कि यू हैव टू यूज दिस थिंग एंड इम्प्लीमेंट दिस, तो प्रोजेक्ट का नाम जानने से आपको हेल्प होगा नहीं कुछ। वो प्रोजेक्ट के अंदर जो टास्क, सब टास्क 14 है, सब टास्क 15 है, दैट इटसेल्फ इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन। और आई थिंक उसको एग्जीक्यूट कर देते हो 14th को, 15th को, 16th को, तो आपका एक्सपीरियंस साल बढ़ने लग जाता है इन इंडस्ट्री। वहां पर लोग लिटरली, वेरी ऑनेस्टली आई बिलीव कि वहां पर उस एक चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग 6 महीने लगाते, अपने 6 महीने के एक्सपीरियंस में ये चीज गिनाते हैं कि वी हैव वर्कड ऑन दिस, जो आपने उस प्रोजेक्ट के किसी एक सब टास्क में सीख लिया। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखा हुआ है। एवरीवन शुड ट्राई दैट रेदर देन कि सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम देख लिया और अपनी इच्छा से उसको इम्प्लीमेंट करने लग गए कि मुझे ये आता है फ्रेमवर्क तो मैं इससे कर दूंगा। वो मत ट्राई करो, जो लिखा हुआ है उससे करता है बेटर है। Thank you, sir. Yeah, Robin Kumar, I think we'll take quickly. We'll have to finish this. Robin, yeah, you can go next. ये Robin सिलसिला Kumar. खत्म नहीं होने वाला क्वेश्चन था। So, what I would advise you, मतलब I would love to answer all the questions. Discord पे पिन कर सकते हो, WhatsApp पे I think अभी भी Hello, Shubham. पे डाला हुआ है। तो even if candidate ask ना web on yes, we can schedule any other session also. But I would be I would like to be as helpful as I can because लोगों ने मेरी help करी थी, लोगों ने उस वक्त मुझे motivate किया था, तो I would like to give it back. But आज actually थोड़ा सा कि मुझे ये बाद में पता चला कि this is scheduled. Sorry everyone for this. Yeah, Akshata, you can complete your question. Sorry to interrupt in between. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो शार्पनर के डैशबोर्ड पे दिए हुए टास्क है उसके अलावा भी कुछ किया था क्या, मतलब प्रोग्रामिंग स्किल इंक्रीज करने के लिए? ये टाइम नहीं मिला, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैंने आपको बताया जैसे ऑलरेडी कि 2 से 2.5 महीने में मैंने पूरा कंप्लीट किया था 3-4 मॉड्यूल, तो टाइम ही नहीं मिला बाकी जगह से भी देखने का। और फिर मतलब दिस इज द सेम थिंग कि आप कहीं पे भी जब कुछ भी तैयारी करते हो तो रेदर देन गोइंग सोर्स वाइज डाइवर्जेंट, एक ही सोर्स पकड़ो एंड देन वहां से अपना कमांड अच्छी कर लो। दैट शुड बी द अप्रोच व्हाट आई थिंक। शार्पनर पे मतलब बहुत चीजें मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, सब कुछ तो कवर है, तो बाहर से अगर वहां से नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन वी कैन ट्राई समथिंग एल्स। अभी मतलब ये चीज देखिए कि इवन द रिसोर्सेज आर नॉट दैट प्रिसाइज। जो शार्पनर पे आपको ना किसी टॉपिक के लिए मिलेगा तो देयर माइट बी ए यूट्यूब प्लेलिस्ट, देयर माइट बी ए यूडेमी कोर्स, देयर माइट बी वीडियोस ऑफ यश और वैभव। तो ये चीजें इन्होंने आई थिंक चेरी पिक करके बहुत ऑप्टिमाइज्ड उठाई है कि ये सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है जिनको सिर्फ उनको देखने से मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था। अगर किसी को दिक्कत आ रही, जैसे कुछ टॉपिक्स में मुझे आती थी दिक्कत, तो गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया, उन टॉपिक्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ और देख लो रेदर देन कि खुद से ही एक नया मॉड्यूल पैरेलल स्टार्ट कर दिया कि किसी यूट्यूब चैनल ने सीरीज चलाई है तो वो भी ज्वाइन कर ली, वो बहुत फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। Makes sense. Okay, thank you. Yeah. टेंशन मत लो, I'll give you set of questions, ठीक है, to everyone, ठीक है, questions कम पड़े, so I'll give you questions. I have questions already made, ठीक है, so I'll give it to you for practice, ठीक है, जब तुम डेवलपमेंट करो parallelly you can practice those set of questions, ठीक है, that will be really useful, ठीक है। बट अभी क्या है ना, do not go on lead board क्योंकि तुम लोग खुद ज्यादा कंफ्यूज हो गए, तुमको नहीं पता कि वो क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, बिकॉज नाउ इफ यू आर गेटिंग इनटू एरेज, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, एक एरेज में कोई लीड कोड में जाके सर्च कर रहे हैं, उसमें 4-5 टैग्स है, ठीक है, वो एक एरेज जानने से नहीं होगा वो क्वेश्चन, राइट, ठीक है। सो आई विल गिव यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, पहले ये पूरा खत्म करो, डेटा सक्सेस का जितना मॉड्यूल है उतना खत्म करो, आई विल गिव यू सम सेट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, दिस इज यू विल कीप ऑन बिकमिंग बेटर, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन, प्रॉब्ली आई बिलीव सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही होंगे, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, शुभम, क्या जैसे मैं अभी डीएसए मॉड्यूल पे हूँ और जैसे अगर मैंने कोई भी डीएसए टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर बाद में जब लाइक 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैं उसे दोबारा देखता हूँ तो मैं लाइक भूल चुका हूँ, तो लाइक मैं दोबारा उसे पढ़ने के लिए जो मोटिवेट पहले दिन था ना वो अब नहीं रहता, तो उस चीज से कैसे ओवरकम किया? सबकी अपनी अपनी मोटिवेशन होगी, मतलब वेरी ऑनेस्ट, आपकी जिंदगी में कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपने ज्वाइन किया है इसको, राइट इट डाउन कि क्यों तुमको टेक जॉब में आना था या फिर क्यों तुमको नौकरी चाहिए। दैट शुड बी योर ड्राइविंग फोर्स फॉर एवरीथिंग। कि अगर कहीं मन नहीं लग रहा है, किसी क्वेश्चन को वापस करने में जोर आ रहा है, किसी एरर में फंस गए हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो हाउ टू गेट दैट आउट। मेरे लिए कुछ और था, आपके लिए कुछ और होगा कि हायर पैकेज पे जाना है या किसी को प्रूव करना है,
फैमिली में अपना मेटल प्रूफ करना है या दोस्तों में दिखाना है, देयर वुड बी समथिंग, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स होगा ना, वो ड्राइविंग फोर्स पिन पॉइंट कर लो। जिसने एक बार मोटिवेट किया वो बार बार करेगा, उसको लिख लो कि दिस इज द थिंग आई वांट टू अचीव, वो निकाल लेगा यार। सबकी लाइफ में मतलब अप्स एंड डाउन्स का कर्व है ये, कि कभी आप मोटिवेटेड फील करते हो, कभी नहीं करते हो। मैंने 7 दिन छोड़ा भी है बीच के अंदर। 7 दिन ऐसा हो गया था कि मैंने ओपन ही नहीं करके देखा शार्पनर का पोर्टल। किसी का कॉल आया कि आई एम बीइंग असाइन्ड बाय यश, आई वांट टू नो कि व्हाई आर यू नॉट प्रोग्रेसिंग ऑन योर मॉड्यूल। तो मुझे याद आया कि अरे यार मैंने ये जर्नी भी स्टार्ट करी थी। ये होता है, सबके साथ होता है कि लो फेजेस आती हैं जिनमें आपको लगता है कि मैंने नहीं सीखा, मतलब तो उसके अंदर आपके पास ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, वो लिख लो कहीं पे और यू विल गेट थ्रू। थैंक यू। नाइस। ठीक है गाइस, आई थिंक सो लाइक वी हैड एन अमेजिंग सेशन विद शुभम एंड सबको बहुत अच्छा लगा होगा समझ के। अभी आई थिंक सब लोग बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं। और शुभम डिस्कॉर्ड में भी बहुत अवेलेबल है, उसे परेशान कर सकते हो आप डिस्कॉर्ड में भी, या ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एंड शुभम थैंक यू यार, लाइक इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। आई थिंक लाइक बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगा ये। एंड या मतलब आई थिंक अभी और चल जाता बहुत लेट देर तक, बट आई थिंक ठीक है। सीरियसली सॉरी ऑन दिस एंड, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ पहले से प्रिपेयर Okay. ठीक है शुभम, yeah, I think we can conclude the session for today, guys. Yeah, everyone's saying thank you in the chat. Nice. Thank you guys for joining. Goodbye. विश यू एवरीवन, लाइक विश यू गुड लक एवरीवन। आई थिंक आप सभी इंटरव्यू प्रोसेसेस में जाएंगे, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड जस्ट डू योर बेस्ट। Yeah, I think अब जब वो लोग आएंगे तो उन लोग भी बोलेंगे कि शुभम ने हमें मोटिवेट किया था। वन मोर थिंग, तो जैसे मेरे लिए, मैं अभी नाम भूल गया उनका, बट मेरे लिए वो वीडियो काफी मोटिवेटिंग था। उस दिन मुझे लगा था कि यार इतना कर जा कि ये वीडियो तेरा भी डले। तो आई थिंक आज आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हाईएस्ट आप अचीव कर लो, अबव 20, अबव 18, कि आप लोगों को भी एक बार मौका मिले टू डिलीवर इट बैक टू द कम्युनिटी। ये भी लोगों का मोटिवेशन हो सकता है। मेरे लिए था, मुझे पता नहीं था कि मैं सही में पहुंच जाऊंगा, बट लगता था अंदर से कि एक बार तो लाइफ में कुछ करना चाहिए। Nice. थैंक्स सर। Thank you, Awesome, Shubham. awesome. Thank you. Thank you everyone. Have a nice. Yeah, bye. Thank you, Shubham. Bye bye. Bye bye. Bye everyone.